परफॉर्मेंसेज स्पीक अप। आप अगर उस दिन अच्छा नहीं खेल रहे, उस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेल रहे, नो मैटर यू यू हैव अ वर्ल्ड 11, वो आपका कोई रिजल्ट नहीं लेकर आती। सो इट इज़ पुटिंग अप अ शो इन द मिडल जहाँ पर मैटर करता है। उसके बाहर आप जितने मर्जी नाम ले लें, यहाँ प्रॉब्लम यही है कि बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही, बॉलिंग बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, और एज अ रिजल्ट वो टीम कहीं नज़र नहीं आ रही। तो आज फिर इनके पास मौका है, अभी भी ये टूर्नामेंट की रेस से बाहर नहीं है। इनके पास भी स्टार्स हैं, बिलाल आसिफ है, अब्बास हैं, मोहम्मद अली खेले अभी टेस्ट मैच रिसेंटली, शोएब मलिक द मोस्ट एक्सपीरियंस T20 क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान। तो आई थिंक हुरैरा यंगस्टर्स में से दे हैव द पावर, बट इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग फॉर देम। वो एक कह ले कंप्लीट परफॉर्मेंस कि तमाम टीम एक जेल होकर एक बड़ी परफॉर्मेंस डालती है, वो चीज़ नहीं मिल रही इन्हें। और दूसरी जानिब जो परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है वो ग्लिम्प्स में हो रही है, पोर्शंस में हो रही है कराची वाइट्स की जानिब से। हमने देखा सोहेल खान ने अच्छा स्पेल किया, उमैर बिन यूसुफ ने एक अच्छी इनिंग खेली, लेकिन जो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जाती है उनसे शायद वो नहीं हो रही है। 4 में से 2 जीते हैं, 2 मैच हारे हैं वो। देखिए ऑब्वियसली अगेन वही बात है कि जब आप इस टीम को देखते हैं तो आपको लगता है कि सभी कुछ है, लेकिन जब बात आती है कि उसे डिलीवर करने की, तो कहीं ना कहीं दे हैव लॉस्ट इनिशिएटिव। कभी अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, कभी मिल गया तो मिडिल से कैपिटलाइज नहीं हुआ। तो वो 20s 30s, चाहे ये छोटा फॉर्मेट है, आजम है 2-3 दफ़ा स्टार्ट मिला, उसको बड़ा नहीं कर सके। तो इन्हें अपनी परफॉर्मेंसेस को बढ़ाना है, इसको स्ट्रेच करना है। कैमियोज आ रहे हैं बट दे नीड ए कंप्लीट इनिंग। अब देखें साहिबजादा 60 रन किए, कामरान गुलाम 70 रन किए, उसके साथ वो आए हारिस आए, उन्होंने भी लंबी इनिंग खेली। तो आपको T20 में भी कैरी ऑन करना है। अ गुड 20-30 इज समटाइम्स इट्स ऑलराइट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड प्रॉपर बैटिंग, रन्स चाहिए आपको। एब्सोल्युटली। 2030s की आपने बात की है, ऐसा लगा जैसे 2030s तो बहुत सारे प्लेयर्स ने किए हैं, फिनिश नहीं कर पा रहे हैं मैचेस स्टार्ट लेने के बाद। आजम खान का भी आपने जिक्र किया, 2 से 3 बार उनको ये मौका मिला कि वो मैच फिनिश कर सकें, जीत सकें, लेकिन शायद वो एक मिसिंग लिंक है। देखिए ये एक ऐसा गेम है कि अगर जीरो भी करना है तो मिडल में जाना है। तो इसका जो एक्शन है वो मिडल से ही कंप्लीट होता है। यू कांट जस्ट गेट आउट एंड सिट इन द डग आउट एंड थिंक कि ये काम हो गया। सो फॉर बैटर्स टॉप 6 स्पेशली, दे नीड टू रियलाइज कि उनका काम है खेलना। इसमें कोई 20s 15s वाला बॉलर के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे, वंस इन अ ब्लू मून इज फाइन, बट नॉट फ्रीक्वेंटली, नॉट एवरी डे। बैटर्स नीड टू फिनिश द जॉब, और वो यहाँ पर नजर आना चाहिए। एब्सोल्युटली नजर आना चाहिए बैटर्स का रोल। तो देखते हैं कि कप्तान दोनों क्या डिसाइड करते हैं। चलते हैं सिकंदर बाग की तरफ। Welcome to another toss, another important game in the Super 8. More for Sialkot to play for, to keep their hopes alive and get up in the top 4. And of course, Karachi would also like to win it and confirm their semi-final position. The captains here, got a new captain today in Bilal Asif leading Sialkot. And then we have Asad Shafiq with Karachi Whites and Mr. Sohail Idris, our match referee. Who has the coin? Asad has the coin. Heads is the call. And it is heads. Bilal. We are batting first. बैटिंग करेंगे पहले। रीजन बताइए बैटिंग का वजह, लाइट्स में खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी मैच हुआ तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए और विकेट जैसा बिहेव कर रहा है कि बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक लग रहा है, तो कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छा टोटल सेट करें। क्या चेंजेस लाए हैं अपनी टीम में? आज कप्तान आप हैं। जी बस लड़कों को बूस्टअप किया। वैसे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बट उम्मीद है कि आज का जो मैच है बड़ा क्रूशियल रहेगा और लड़कों को भी बूस्टअप किया है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जीते मैच और अपना पोजीशन सेमीफाइनल के लिए इन रहें। पिछले मैच से इस मैच में 11 में कोई तब्दीली? जी एक चेंज है, सोहेबुल्ला की जगह मोहम्मद अब्बास आए हैं, तो उनके एक्सपीरियंस को भी हम यूटिलाइज करेंगे। पहले मैच में 195 बने, आपका क्या सोच है पहले बैटिंग करते हुए? जी बिल्कुल, जैसे कि एक मैच हो चुका है तो मेरे टारगेट तो ये 180 का टारगेट है हमारा, तो लेट्स सी। चलिए, गुड लक। थैंक यू। असद, हैप्पी टू बॉल फर्स्ट? नहीं
क्या दोनों ही टीमें बैटिंग करना चाहते थे, प्लेइंग 11 पे नजर डालते हैं। एक चेंज किया है सलमान, मच नीडेड चेंज है, शायद अब्बास को लेके आए, एक्सपीरियंस आएगा बॉलिंग में। देखिए अब्बास पहले भी खेले थे और उस दिन अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, उन पे अटैक हुआ था तो उसको रिस्पॉन्ड ऐसा, और वो रेन शॉर्टन गेम थी शायद इस वजह से, तो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली वो एक ऐसे बॉलर हैं जो अपना एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं। शोएब अख्तर बड़े टैलेंटेड हैं इसी तरह, लेकिन जो नज़र रहेगी ना इनकी शोएब मलिक स्पेशली बीइंग द मोस्ट एक्सपीरियंस, कि वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि वो बड़ा एक मैग्नेटिक इफेक्ट है उनका इस टीम में। जब वो अच्छा खेलते हैं तो सभी एक पूरी गाड़ी चल पड़ती है। और अगर हम कराची की टीम को देखें, अनवर अली के आने से बहुत ज़्यादा बैलेंस आया इस टीम के अंदर, और थोड़ा कैप्टन अंडर एस्टिमेट करेंगे अपनी टीम को। 130-40 की बात कर रहे हैं, जिस तरह की टीम है 170 भी हो तो इन्हें करने चाहिए। सलमान, एक और चेंज जो हमें नजर आ रही है वो सी का कॉलम है, बिलाल आसिफ कप्तानी कर रहे हैं, शोएब मलिक आज कप्तानी नहीं कर रहे हैं सियालकोट की। क्या वजह लगती है? अब खेल वो रहे हैं लेकिन कप्तानी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा शोएब भाई ने रिलैक्स किया अपने ऊपर से बर्डन और बड़ों को दे दिया है अपनों से बड़े को दे दिया कद में। चलिए, थैंक यू वेरी मच सलमान। जाते जाते बताइए क्या अच्छा टोटल होगा पहले बैटिंग करते हुए सियालकोट के लिए? आई थिंक एनीथिंग अबव 170-160 वो जो है फाइटेबल है। 170 रन हमारे एक्सपर्ट के मुताबिक अच्छा टोटल होना चाहिए। दोनों टीमें तैयार हैं, अंपायर्स तैयार हैं, हमारे दोनों कमेंटेटर्स तैयार हैं। ओवर टू यू कॉम्स। Thank you, Ali. Thank you, Salman. And here we are. Asad Shafiq leading his team out into the field as they've been asked to bowl first. The two umpires for this game. Some changes in both the sides, and they're playing 11 from their last outing. And all to look out for after watching the first game, where it was a high-scoring game. Peshawar scored 195, and in reply to that, Abbottabad were not so far behind. Asad Shafiq and his team, Karachi Whites, have done well and they're still in the top four, whereas Sialkot has been struggling. They've been hot and cold in their performance in the tournament. Change of captain, could be change of fortunes, if that's what they believe. Shoaib Malik hands the captain's cap to Bilal Asif, who decided to bat first today. Hurera's been in good form. He's had a couple of very good outings. He'd like to get one more today. He seems to be having a new partner than usual. Mohammad Hurera with his numbers here. 128 strike rate. 250s in the 14 outings for him. Marina alongside me. Marina, two things that I feel. One is Anwar Ali Khan's addition into the Karachi Whites adds more strength, but then again, they've sacrificed Ghulam Mudassir. I'm not really sure. He's been good and offers a left arm option. We'll see how it goes. Ashir Mahmood is the new opener with Hurera. Yeah, I think he bowled really well, Ghulam Mudassir, but again with Anwar Ali Khan, you have a very handy batter who can hit big. He's very lethal when it comes to death bowling, with his yorkers, with his slow ones, cutters. And this man, you cannot keep him out of the game. So Sohail Khan is lethal with new ball, and even back of the innings, he can come and test the batters. But Bilal Asif said that they are eyeing 180, but I think they've got their work cut out. With Suhail, Dhani, Anwar, Ramiz with leg spin. So they need to have a good strategy. And obviously they need to execute well out in the middle. A lot will depend on Hurera as well. He's got huge potential, but he needs to play a big innings. Sialkot elected to bat, as we all know. Just waiting for the clock to strike 8 o'clock so that we can start off with the second game of the day. Ashir Mahmood is taking strike, with Hurera being at the non-strikers. This is how the field is, deep square leg. And there is a third, the two men outside the circle. Otherwise, rest is all in regulation. Got one slip. Khurram Manzoor standing next to Azam Khan. All set and ready now. It's 8 o'clock in Karachi and second game of the day. Straight away off the mark with that single, Ashir and Karachi Whites. It's good cricket, positive cricket. It wasn't a bad delivery. That's what you expect of Sohail Khan, coming in, hitting the deck hard, hard length. Just straight away off the mark.
Need to keep rotating strike. We've seen that in the previous game. Peshawar did it really well. Aptabad did it really well. So you cannot underrate the importance of strike rotation in a T20 game. Sohail Khan is going to be an opponent, a tough one for Herrera to handle, because he's been doing very well with that new ball. Moves it both ways, and we've seen a couple of things about Herrera, how he has been losing his wicket in the power play. As I mentioned earlier, he's had 2 good outings. The surprising factor is that the ball has hit the stumps most of the time with his dismissals. Nice looking shot. That's the kind of form he's in. It's just a little bit of width. That's enough for him to play it through point. Beautiful hands by Herrera, just waiting for the ball to come near. And all he did was time it to perfection through that gap. That's a lovely shot. Just standing and waiting right underneath his eyes. Slightly opening that face of the bat to pierce that gap. That's a good shot to get off. Again, you did mention that he couldn't really turn the starts into bigger innings. Few technicalities being pointed out by our colleague Salman, but I'm sure he must be listening to him. Need to work on them to be more consistent. Yes. That's good cricket, really good cricket. Got a boundary on the previous delivery right away. Soft hands, guided to the third. Already 6 of 4 deliveries. This time the ball comes just a little in off the surface. The one that was hit for a boundary had a bit of away movement, but he's nicely covered the line of the ball, Herrera. Now Ashir on strike. Yeah, once again, just a little shape away. Haven't seen much of Ashir Mahmood, but it looks pretty confident. The way he's coming out and putting that left foot forward with the line of the ball, bat and ball all in place. It's good to see that Asad Shafiq is spoiled for choices. With Shahnawaz Dani, Sohail Khan and now Anwar Ali. He had to leave out Ghulam Mudassir, which would not be fair on him, you'd feel, but then you can only play that many quicks. Oh, that one just a little bit of movement inwards off the surface, gets the inside of the bat. 7-4, no loss. You need to be careful. Again, just no footwork. Didn't cover the line of the ball, and the bat coming way outside of the line. He's lucky he did not chop it on, but you need to be very careful. Sohail Khan can swing it both ways and set you up nicely. 7 without loss. Shahnawaz Dani. Good call for a single. Good batters will like pace, provided there's no exaggerated movement, sideways movement. Shahnawaz would rely more on sheer pace compared to his partner from the other end, who's not express fast, but he moves the ball around and it's tougher to handle. Just like that. Just like that. Pace on offer, and you'll go through with your hands.
There was an invitation to Herrera, outside off stump. Slightly shorter on the length, just allowing him to free his hands. And we've seen that he's been doing it superbly. Again, just standing, a little forward push. That's just pure timing on that one. A little bit of wrist work as well. But you will get punished if you bowl that line in length. No troubles for Herrera there. Driven but straight to the field. Shahnawaz lucky this time. Was a little over pitched on that occasion. It seems like Herrera probably is a little reluctant in regards of the footwork. Even in this one, you can see his back foot. It's moving away from his stance. He's not that balanced as a top order bat. You would like that to have. Probably just trying to create an angle, but that is always dangerous, especially against the deliveries that are inside the stumps. There you go again. He'll get a boundary, but with a heart in his mouth. Time and again we've been talking about it, that his bat hangs out a little bit away from the body. And since you mentioned no foot movement, the second time in this innings that he's taken the inside part of the bat and almost crashed into the stumps. Well, you cannot survive like this. Again, just staying sideways, the bat and bat gap, have a look at that. It's so away, and the bat path is also coming from outwards. Never easy. You will get in trouble. At least there's some opportunity provided. At times what happens when you're a top order batter and you are getting out, especially within the stumps line, you tend to start thinking about your stance, where your guard is. And a lot of things keep going on your mind, but you cannot do those type of changes during a tournament. What you can do is just stick to basic. Oh, picked up nicely. Not reluctant at all, Asher, on this occasion. The length was offered, and that was a great pickup shot. One bounce over the fence. Pulls that one from in front of the off stump. 25 years of age, and he's got an average of 46 recent good performances. He's been added to the side, Asher Mahmood, and not just added, he's given the opportunity to open, and that shot tells you that's not a bad choice. 21 for no loss after 2 overs. It's a good going. It's just exactly 10.5 and over. Herrera has played a few good shots and has looked living dangerously on a couple. That's gone high in the air. This should be out. Inside the circle. Yes, gone. Trying to pull one, and Sohail Khan has the last laugh. You just felt there was simmering under the surface. Something had to give. He was not looking 100% with his stroke play, and this is a soft dismissal. Playing that shot on the move, was never in a solid position. A good base wasn't there. And when you do that against someone like Sohail Khan, you will pay the price. It was short, it was there, but rather opting for an horizontal bat, he probably was very late on that shot. Lucky got caught there. But the struggle continues for Herrera. Gone on 14, 1 down on 21. Karachi Whites has reshuffled their batting order. Momin Waqar coming at number 3,
So a new opening partner in Ashir Mahmood and our new number 3, Momin Waqar. Did I say Karachi Whites? I'm sorry. And you're not even correcting me. It's Sialkot. So lots of changes. Even a captain change. I think it's one of those sides still looking for their best possible 11 and at the same time trying to qualify for the semis. Ooh, a tentative push. Yeah, smiles from Suhail. He will entice you there. He has the ability to set you up, few outswingers and then in swinging delivery. Not sure what kind of shot that is. He was on the front foot, but again, just a weird swing. Just trying to tickle it down the third. You've got slip in place. You have to be very careful though. A very shaky start by Momin. Suhail Khan always in the wicket column. Scram tip, he was on the move. Hurera, he was in no shape to pull that one out. Again, just allowed the ball to come too close to him. Never got the elevation. Al-Aftab collected it very low beneath the eye line. He was lucky he did not drop it. Wasn't good technique of catching, but Hurera, the struggle continues. You need to do a lot of work in terms of clarity and technique. He's got the toe in, but that's enough. Couple of bounces and 4. Suhail Khan won't like that. I can tell you that much. Young man Momin Waqar throws his bat at that, which had a bit of width available. Earns a boundary. Yeah, pitched up, then punished. Plucked it right out of the middle of the bat. Good follow through though. It was very stable. Just touch too fuller from Suhail Khan. That's not the natural length he usually bowls. But with slip in place, he might be inviting Momin to chase and play that drive. That's a cross-bat shot. It's got some timing on it. Wow. How did he play that shot behind the square? He must have practiced that a lot because his bat is cherry red. Just whipping it. Whatever is being offered, he's going after it. Initial nerves, I think, but he'll take it. Moves on to 8. Look at that. How red is that? Wow. That's a good pull shot. In control. There is protection, yes. And he's pulled that from in front of his visor. 3 gone, 30 for 1. Quiet start for Sialkot. Herrera back in the hut. Scored 14. Ashur and Momin, the young ones, are out. Got Salman. He can bat. Malik, obviously, with ample experience. Hamza, Bilal and Usman. And someone needs to put their foot down and take the responsibility. They did mention 180 at the toss, but the intentions are far away from it. And you cannot blame them because Karachi has a lethal bowling lineup. That batting order that we just saw, that suggests that Shoaib Malik has really pushed himself down the order. A couple of games ago, he batted 3. Last time around in the stadium, he batted a 4. And today, he's at 5.
according to that lineup we saw. Hi. Champ. Just a single. Wicket, man. Wow, wow, wow. That has been slapped, smashed and thrown away to the mid-wicket boundary for a maximum. My gosh, that was effortless. Made Dhani look so ordinary. He's got some decent pace, we all know that. But that shot, look at that, just stand and deliver right out of the middle of the bat. Picked up the length very quickly, no troubles there. That is some serious potential from Momin. Pick up shot, gone. Oh, he's dropped. Arif Yaqub, the fielder. Oh, got a life for sure. Dhani, he's disappointed. Should have been taken. At this level, these are regulation catches. Again, he was cramped for room. Never judged where the ball was. It was traveling and he was few yards in the boundary. Picked up once again. Clears the infield. They are dealing in boundaries, Asher and Momin. He's got a different stance, if you can see. Just a forward press. He plants that front foot, cross, and then he picks it up. It's tricky, but it's rewarding him. These two young men look interesting. Asher and Momin Bakar, they've been playing some very good shots. Bold shots. Power hitting at display, though they don't look very powerful. But they've got a good bat and a good timing. Look at that. Shahnawaz Dhani has been taken to the cleaners. 4 overs gone, 49 for 1. लाजवाब फुल शॉट। शाहनवाज धानी के ओवर में 19 रन आए, लेकिन इस शॉट का जवाब नहीं था। पानी भी नहीं आता। दानिश अजीज बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग में कारआमद हैं आजकल। 26 विकेटें, 29 का एवरेज। हैंडी क्रिकेटर हैं और यहां पर बहुत ही फ्लाइंग स्टार्ट मिला है सियालकोट को। आशिर ने जबरदस्त बैटिंग की, मोमिन ने भी। सुहेल खान को मुसीबत में डाला जरूर इस बॉल ने, लेकिन रोकने में कामयाब हुए। 50 रन मुकम्मल हुए सियालकोट के। और कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ आ गए हैं पाकिस्तान के मायनास कमेंटेटर अली यूनुस। खुशामदीद अली। बहुत शुक्रिया फैसल।
गैप नहीं तलाश कर पाए। अच्छी एफर्ट कहेंगे सोहेल खान की जानिब से। और फैसल ऐसी ही परफॉर्मेंस लिफ्ट अप कर सकती है सियालकोट को। इतनी बड़ी साइड है, यहाँ पे चांस हो सकता है, लेकिन स्लिप हो गए। उमैर बिन यूसुफ फील्डर थे, तो एक ऐसी परफॉर्मेंस की जरूरत थी सियालकोट की तरफ से। इतनी बड़ी साइड हो, इस टूर्नामेंट में काफी नीचे है पॉइंट्स टेबल पे, एक मैच जीता है सिर्फ अपने 4 मैचेस में। तो शायद ये पार्टनरशिप, ये 2 नए लड़के मोमिन और आशिर इंस्पायर कर सकते हैं बाकी टीम को भी। और यू स्पोक टू सून अली, क्योंकि मोमिन आउट हो गए हैं। ब्रेक थ्रू दिला दिया दानिश अजीज ने। थोड़ा सा राउंड आर्म एक्शन था, गेंद नीचे रही और आजम खान ने बाकी का काम तमाम किया। थोड़ा ज्यादा जल्दी कर गए मोमिन, स्टार्ट मिल गया था। 9 बॉलों पे 18 रन बना लिए थे। दानिश अजीज यूजुअली नो बॉल नहीं करते हैं, स्लो बॉल किया। और जो भी बॉलर पेस वेरी करता है वो कामयाब रहता है। यहाँ पे स्लो बॉल किया, दूर बॉल किया, बॉल थोड़ा लो भी रहा, लेकिन शॉट सिलेक्शन डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि जरूरत नहीं थी। आगाज मिल गया था, कंटिन्यू रखना था, कैपिटलाइज करना था, लेकिन ये हर्ट करेगा शायद सियालकोट को। 18 रन बनाकर आउट हुए मोमिन, 51 पर 2 सियालकोट। शोएब मलिक आ गए हैं क्रीज पर, और ये बुरा वक्त नहीं है शोएब मलिक के लिए विकेट पे आने का, क्योंकि एक तो प्लेटफॉर्म भी मिल गया है और शोएब मलिक के पास टाइम भी काफी है, और अभी पावर प्ले भी चल रहा है। तो ये सियालकोट के लिए अच्छी खबर है। यहां से इस इनिंग्स को वो गाइड कर सकते हैं। वो जो 170-75 का मजमुआ है वहां तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। ये मैचेस देखिए आप, 523 मैचेस खेल चुके हैं और बिल्कुल 13,000 रन के करीब हैं। 37 का शानदार एवरेज, 127 स्ट्राइक रेट। और यूजुअली ऐसे रन जो हैं ये 4-डे क्रिकेट में बैटर्स करते हैं, लेकिन उन्होंने T20 में कर रखे हैं। ये शो करता है इनकी क्लास, कि कितने कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं ओवर द इयर्स। जहां भी ये खेले हैं क्रिकेट, जिस भी फ्रेंचाइज में खेले हैं, इन्होंने परफॉर्म किया है। अभी भी इन डिमांड है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में। अच्छा आगाज, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया कि गैप तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ये एडवांटेज है कि अब जिस तरह का स्टार्ट मिल गया, जैसे मैंने कहा, शोएब टाइम ले सकते हैं अपना। एक रन के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया और स्ट्राइक भी वही संभालेंगे अगले ओवर में। 5 के बाद सियालकोट 52 पे 2। एक बार फिर नजर डालते हैं जो शॉट के लिए मोमिन, शॉट खराब शॉट सिलेक्शन कहेंगे, क्योंकि बॉल दूर था फैसल और स्लो था पेस में। और दानिश अजीज के पास से हैबिट है विकेट लेने की, पार्टनरशिप ब्रेकर है ये, और कमबैक कराया है कराची का, क्योंकि एक ऐसा लगा कि बहुत ही पीछे रह गए हैं। बिल्कुल, और दानिश जैसा मैंने कहा अच्छी बॉलिंग फॉर्म में है, ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं। राउंड आर्म और बिल्कुल अक्रॉस द लाइन खेलने चले गए। शॉट का ऑप्शन भी सही नहीं चूज किया। आप ऑफ साइड पर जा सकते हैं, बॉल की लाइन और लेंथ तो वही सजेस्ट करती थी, लेकिन शायद पहले से ही उन्होंने सोच लिया था और खमियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। अनवर अली के आने से बैलेंस बहुत शानदार हो गया है कराची वाइट्स का। 167 विकेट हैं, 4 विकेट्स, 30 रन दिन की इनकी बेहतरीन बॉलिंग है। ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, बहुत ही कमाल के हिटर भी हैं, और इनका शुमार भी उन अनलकी क्रिकेटर्स में होता है जो बहुत ज्यादा क्रिकेट पाकिस्तान से नहीं खेल सके। टैलेंट था, स्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं उस टैलेंट को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पाए पाकिस्तान के लिए।
अच्छा टाइम किया शोएब मलिक ने, चेज ऑन है, शाहनवाज धानी गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या लाजवाब टाइमिंग थी, जिस बिल्कुल फ्लिक किया, हल्का सा बल्ले का रुख मोड़ा और गेंद गोली की सी रफ्तार से बाउंड्री के बाहर गई। यहाँ पे बॉल अगर करेंगे तो शोएब मलिक नहीं बख्शेंगे। ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है, टांग पे थोड़ा शफल किया, बॉल स्टंप्स के अंदर था, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, प्लेसमेंट कमाल की रही, रिजल्ट भी शानदार रहा। और अब उसके सिलसिले में जो फील्डर गली में था वो उठा के मिड विकेट पे आ गया है। अनवर अली बहुत छोटे से रनअप से कर रहे हैं, बहुत कैजुअल रनअप से बॉल कर रहे हैं, क्योंकि कमबैक कर रहे हैं, फिटनेस इश्यूज रहे, इसी वजह से शायद थोड़ा केयरफुल लग रहे हैं। जी जैसा आप पहले जिक्र कर रहे थे, जब अनवर अली की जो उठान थी वो तो एक प्रॉपर फास्ट बॉलर वाली थी, स्विंग बॉलर वाली थी, लेकिन ग्रेजुअली जूं जूं उनका करियर बढ़ा है कि बॉलिंग में वो काट और वैरायटी कम होगी, और अब तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही छोटा रनअप है। क्या ये इंजरी की वजह से है या कोई नई हिकमत अमली है उनकी? इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में शायद वो ऑलराउंडर फिनिशर के तौर पे अपने आप को ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन पावर प्ले में बॉलिंग कोई आसान काम नहीं है। शोएब मलिक ये करते दिखाई देंगे आपको, बाउंड्री हासिल करेंगे फिर सिंगल हासिल करेंगे, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे बिलीव करते हैं। और फैसल इनके बारे में तो जितनी बात की जाए वो कम है, एक केस स्टडी है शोएब मलिक, जैसी फिटनेस उन्होंने अभी तक रखी है, जो कमिटमेंट लेवल है इनका क्रिकेट के लिए, अभी भी हंग्री हैं परफॉर्मेंस के लिए, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अभी भी कम बैक करना चाहते हैं। तो ये कमिटमेंट लेवल होनी चाहिए जो किसी भी क्रिकेटर को अपने सीनियर की तरफ देखना चाहिए, वो शोएब मलिक हैं। जी बिल्कुल, एम्बिशन और होप उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ी, जिसका मतलब ये है कि वो प्रेपरेशन का लेवल, उनकी ट्रेनिंग का, उनके डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस जो भी हैं, वो स्टिल उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब एम्बिशन हो तो फिर आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। नो की कॉल लगाई शोएब ने बिल्कुल फौरन ही, और अच्छी कॉल थी। अच्छा लगता है क्रिकेट ग्राउंड पर जब नन्हे मुन्ने तमाशाई आते हैं, और ये बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाएं जानिब नीचे अपने आप को स्क्रीन पर देखकर हैरान हुए। जी बिल्कुल, ये आप ही हैं, और बोल्ड हो गए। आशिर धोखा खा गए स्लो डिलीवरी से। अनवर अली की जो नॉर्मल बॉलिंग है उसकी रफ्तार भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही स्लो थी और चूक गए। एक मरतबा फिर प्री मेडिटेट कर गए और बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल। यार रनअप भले लंबा ना हो, क्वालिटी बहुत शानदार है इनकी बॉलिंग की, सेंसिबल बॉलिंग। उनको अंदाजा था कदमों का इस्तेमाल करें इस पिच में, उस तरह बॉल निकल नहीं रहा है, इसलिए दूर बॉल किया, पेस को वेरी किया, बॉल नीचे रहा, रिसीव किया आशिर महमूद को और विकेट हासिल किए 57 पर 3। पावर प्ले का इख्तिताम हुआ। 6 ओवर्स में 57 रन तो जरूर बनाए हैं, लेकिन फैसल 3 विकेट्स गवा दिए हैं। ये कॉलम बेहतर हो सकता था अगर ये 2 शॉट सिलेक्शन में थोड़ा बेहतरी दिखाई होती आशिर ने और मोमिन ने। और अच्छी पार्टनरशिप के बाद दोनों ऊपर नीचे आउट हो गए। उस पार्टनरशिप को, उस स्टार्ट को कन्वर्ट करने में नाकाम रहे। एज ए बैटर ये ज्यादा बड़ा जुर्म है बनिस्बत ये कि पहले 1-2 गेंदों पर आपको अच्छी बॉल पड़ जाए और आप आउट हो जाए। और यहाँ शोएब मलिक पे फिर प्रेशर आ गया। कब तक वो ये रोल अंजाम देते रहेंगे? हालांकि इस रोल से वो बिल्कुल भी नाशना नहीं है। कंप्लीटली धोखा खा गए अनवर अली की पेस से।
या लैक ऑफ पेस जिसे कहना चाहिए उससे। लेकिन इन 2 विकेटों के बावजूद पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर था ये सियालकोट का, 3rd हाईएस्ट। सलमान खान 85 की स्ट्राइक रेट है, 48 इनका बेहतरीन है। इतना करना होगा, शोएब मलिक के साथ खड़े रहना होगा। एक रन बना और अली शोएब मलिक ने सियालकोट का उरूज देखा है T20 क्रिकेट में, और अब जो सिचुएशन है 4 मैचों में से 1 जीत और ऑन पेपर काफी थिन बैटिंग रिसोर्सेज लग रहे हैं, उस वक्त इनके जहन में क्या चल रहा होगा, क्योंकि वो जो सियालकोट की टीम जिस नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुई थी उसकी तो क्या ही बात थी। या नो डाउट, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद अब दोबारा से रीविजिट करना होगा, सब कुछ दोबारा से बनाना होगा, और शोएब मलिक से बेहतर कोई इंसान है नहीं सियालकोट के लिए। सैफ बदर एक प्लेयर थे, वो नजर नहीं आए सियालकोट से इस सीजन में। बॉल हो गए, शानदार डिलीवरी, स्टंप्स टू स्टंप बॉल किया है, ड्राइव मारने चले गए, बहुत बड़ा गैप बल्ले और पैट दरमियान, जिसकी वजह से अपनी विकेट गंवा दी है सलमान ने। और एक एक करके जिस तरह सियालकोट के बैटर आउट हो रहे हैं, शोएब मलिक यकीनन नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपने बॉल नोच रहे होंगे, क्योंकि ये इस बॉल में कोई ऐसी खास बात नहीं थी। एंगल के साथ अंदर जरूर आई, लेकिन आप नेशनल T20 के लेवल पे आप देखें कि बैट और पैड में कितना बड़ा गैप था, पैर ने बिल्कुल बॉल की लाइन को कवर नहीं किया। सलमान की वापसी हुई, सिर्फ 1 रन बनाए, सियालकोट 60 पर 4। सियालकोट की प्लानिंग को क्या कहेंगे? वैसे तो हमजा नजर आ गए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन प्लानिंग के बारे में क्या कहेंगे? 2 मैचेस में इससे पहले दोनों में टॉस जीते, पहले बैटिंग करने का फैसला किया, दोनों हार गए। आज भी टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है, ऑल्दो कप्तान चेंज हुआ, स्ट्रैटेजीज चेंज नहीं हुई। 15 की एवरेज, 112 की स्ट्राइक रेट हमजा की, और आज भी ऐसा लगता है कि काफी पीछे है मैच में, सीख नहीं रहे हैं शायद। अली अगर ऐसे बैटिंग करेंगे तो चाहे पहले करें या बाद में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और शायद शोएब मलिक को इस चीज का एहसास है, क्योंकि वो इन प्लेयर्स के साथ डे इन डे आउट खेल रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखिए फैसल, मेरा पॉइंट ये है कि अगर शोएब मलिक जैसा एक्सपीरियंस्ड क्वालिटी वाला बैटर आपके पास मौजूद हो, एक बार फिर नजर डाल लेते हैं, वही गैप, बहुत बड़ा गैप, अपनी लाइन को बिल्कुल ही मिस कर गए। एक्सपेंसिव ड्राइव, एक मौका मिला था सलमान को लेकिन गवा दिया। तो अगर शोएब मलिक टीम में मौजूद हैं तो क्यों ना अपने ऊपर लिया जाए और चेस किया जाए। पहले बैटिंग करना नहीं काम आ रहा है, आप नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, बॉलिंग नहीं साथ दे रही है सेकंड टाइम पे, अच्छा शॉट है, फील्डर मौजूद है, 1 ही रन होगा, तो क्यों ना अपने ऊपर लिया जाए, चेस किया जाए, क्योंकि इनके अंदर या हुरैरा के अंदर वो पोटेंशियल है कि ऑन देयर डे ये मैच जिता सकते हैं। एक सोच हो सकती है, लेकिन अभी भी देखिए जब शोएब मलिक बैटिंग करने आए तो प्लेटफॉर्म सेट था, तो शोएब मलिक ने अपने हिस्से का काम अभी तक सही किया, अभी भी वो खेल रहे हैं और 9 रन बना चुके हैं 11 गेंदों पर, लेकिन उनके सामने जो भी आया वो आउट होके गए। अगर चेस सिचुएशन में इस तरह विकेटें क्लम्प्स में गिरती हैं तो फिर हालत तो वही होनी थी। ना, मैं पार्शली एग्री कर सकता हूं, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि अगर शोएब मलिक अपने ऊपर मैच लेके खेलेंगे, चेस करेंगे, तो सिंगल हैंडली एंड तक जा सकते हैं। ये इस हद तक जाहिर है आपकी इस बात में भी वजन है कि एटलीस्ट हार तो वैसे भी रहे, स्ट्रेटेजी चेंज करने में और पहले बॉलिंग कर लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जिस बॉलिंग को अगर आप कहते हैं कि वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट सूट है, अगर वो किसी टीम को जल्दी आउट करने में कामयाब हो गए 120 से 130, तो आपकी यंग बैटिंग लाइनअप पे कम प्रेशर होगा
फिर शोएब मलिक, हुरैरा, इस तरह के प्लेयर हैं जो कि एक एंड बिल्कुल ब्लॉक कर दें और अपनी टीम को करीब ले जाएं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अब हिकमत अमली को चेंज कर दिया जाए। लेकिन वो जो डाउट है, शकूक व शबात हैं कॉन्फिडेंस में, फुटवर्क में, लगता है सियालकोट के कैंप में इतने ज्यादा हैं कि शोएब मलिक पे भी उसका असर हो रहा है। फिर देखिए शोएब मलिक का ये टिपिकल स्ट्रोक है जो गेंद को थर्ड मैन की जानिब खेलना चाहते हैं, लेकिन अनवर अली ने पेस बिल्कुल ही कम कर दी अपनी। ये सरप्राइज डिलीवरी थी, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे हमजा को। ये डिसेप्शन शायद अनवर अली लाए हैं कि छोटा रन अप है, लेकिन एवरी नाउ एंड देन वो अपनी एफर्ट बॉल में उतना ही जोर लगा रहे हैं जितना लंबे रन अप से लगाया करते थे। बिल्कुल सरप्राइज कर दिया उन्होंने हमजा को इस मरतबा। ये शोल्डर की मदद से बॉल करते हैं, जहाँ थोड़ी एफर्ट डालेंगे शोल्डर पे प्रेशर तो आएगा, लेकिन इसीलिए इन्होंने ये स्टॉक डिलीवरी, जैसे आपने कहा कि सरप्राइज किया है। डॉट टू के साथ ओवर का इख्तिताम, 67 4 खिलाड़ियां। So these are the 4 wickets till now. The first one skied up trying to pull an easy take, and then the spinner came in and stumped was this batter. Once again deceived by the slower one, and Anwar Ali, the wicket taker this time, and then clean bowled. Danish has been among the wickets lately, and he's been pretty destructive. And this one is over mid-wicket, was a long hop, and Malik's needed no second invitation. 6 runs to Sialkot, a much-needed boundary. Well, he will be their mainstay. If Sialkot wants to get to any respectable score, Malik will have to put in a big contribution with 4 already down. Oh, that was a gift. An absolute gift. A rare bad delivery from Arif Yaqub. It's amazing how he has this way of getting his front foot out and then pushes his hands forward to work the ball into the gaps. Shoaib Malik. Well, that's the normal way, and he's absolutely been wonderful all over his career, especially in the strike rotation. If you want to talk about guys who can rotate the strike easily and run aggressively between the wickets, Shoaib Malik is right up there. Yeah. What do you make of Sialkot today with a change of captain and then a complete shuffle in that batting order? Ashir Mahmood opening with Hurera today. Number 3, they send in Momin. 4, Salman. So we've seen Malik bat at 3, 4, now 5. And they haven't really strengthened their qualification yet.
Well, they've been losing games and they haven't found the winning formula or a complete performance. They have lacked to put up a full show. And that's why they've been experimenting up, down and left, right and center. And Malik, being the most senior player, the most skillful player of the whole team, he also hasn't been able to find his rhythm. And that's why everybody have been here and there trying to find the right spots, the role clarity. Whatever is required, it's just not happened for them. So that's why they have just shuffled things up. And this one, he goes over. Beautiful hit. A huge one. Straight 6 from Shoaib Malik. Stand and deliver. 14 of the over. 9 gone. 81 for 4 Sialkot. Flight, and he got underneath that. Got a lot of power. Good bat. Big distance on that maximum. Just sails into that night sky. Over that dugout. Yes, a different batter. And if you flight the ball up into his zone, he will not spare you with his experience. And he's always been known for playing well against the spinners and dominating them. And he has kept up to his reputation. Any spinners coming on to bowl now will have to bowl really well. If Malik is on song tonight, then the spinners will find it tough. This will be an interesting change. Aftab Ibrahim being brought into the attack. It's only his 5th game and he's got good 2 for 15, his best bowling. This might be the moment where Shoaib Malik and his team would like or prepare themselves to attack and try to get as many runs as possible from this quota of 4 overs. So this will be a bit of a gamble here, knowing that they've lost 4 already. Well, Aftab has been bowling well in the previous games. And he can be slippery as well. And we know that at times batters have been indecisive against decent pace bowling, especially if the bowler has successfully pitched short. We have seen on this track that the ball does not bounce where batter expects it, and at times batters have had trouble facing the shorter one. We'll see how it goes. Shoaib Malik will be on strike, and him against spinners is not easy for any spinner. But against fast bowling, that is one area where Karachi have a chance. Good thing for Sialkot is, yes, they've lost 4 wickets, but they've kept that run rate going. 82 in the 10th over. They're almost 9 runs in over at the moment. And that will help them achieve that target they want. That is such a Shoaib Malik shot. Backward point, he's so strong in that zone. Those wrists and how he just opens the face. Yes, you can't be short and wide to Shoaib Malik. And medium pace bowling, and then you provide him with this length and this width, and he just needs that. And all day he'll keep putting you away. His front porch must also be having an open space where he can, you know, use his wrist and cut the ball, because he's so good in that area. Loves to play in that zone. Hardly fails in that. Yes, he's always been a place where he has been able to score freely, no matter who's bowled to him in that region. It's just that if you bowl him within the stumps, short of length, that is some place where at times he can struggle. Otherwise, if you bowl at his strength, then you'll have a hard time as a bowler. Oh, it's gone through. Oh, and out. Wow, for a moment I thought he's been a touch lucky that he's probably missed it by a whisker, but he hasn't. It was all so quiet, and the umpire puts his finger up, so there's another wicket gone. Half the side back in the dugout. Hamza now walks.
Front foot check, and it seems perfect. In fact, behind the line, the whole foot. And Hamza Nazar trying to drive the ball. But then, look at the gap. Look at the gap between bat and pad. And it just seems to keep increasing. If you see new boys coming in this tournament, this whole season, this has been a common factor in a lot of youngsters. This gap between bat and pad. And this is the first thing which used to be plugged in, which should be closed when you start at the grassroots level. But all the boys, you see, most of them, there's a huge gap between bat and pad, and they suffer while trying to drive this ball. Usman Khalid, the new batter, in to join Shoaib Malik. Both Hamza and Usman have spent a lot of time in the PDP program of Lahore Qalandars, and they have toured a couple of times Namibia and Zimbabwe and other places. But most of the time, they seem as if they've been preparing to hit the big strokes. The technical side, that is some place which needs to be worked upon. It's gone for 4. Didn't intend to play it there, but he's found himself a boundary at around 3rd. It's 87 for 4 for 5, and the new batter arrives. No feet at all, huge gap, and the captain doesn't take slip. Now this is something which has also been baffling us all in this tournament. When you're taking wickets and the ball is doing a bit, why can't you have a slip? And Asad Shafiq, out of all the captains, being so much experienced at the very top, and he's mostly been defensive as a captain. Halfway through, 10 overs gone, 91 for 5. And this is the wicket, and look at how much distance between the front foot and the bat there was. You could see 3 stumps as well, and that is no position to play a simple cover drive, a ball which hasn't done anything, and it's just making a simple ball look special. Nazim Khan over there taking an easy catch behind the stumps. And now Sohail Khan, or is it Arif Yaqub? It's Anwar Ali coming from the pavilion end now. You just made a point about Asad Shafiq not putting in a slip when you know the ball is doing a little bit, which is why we see around the world. I mean, if your captain is a wicket-keeper, very good. He can notice every delivery coming down the line and what kind of movement it's happening or what the batter is doing. But usually otherwise you see captains at mid-on, mid-off. They don't need someone to tell them that the ball is doing something. So going back to the wicket, just have a look where the front foot is planted, and when the bat come down, look at the distance. 2 stumps and even the 4th stump, the bat is just so far away from the body. This is no position to drive a ball. And him being 3 years in the PDP program, and this is such a basic issue. So yeah, we're coming back to that, which is why you see a captain should be in a position where he himself can judge what's going on. You could have a ball swinging and a boundary is hit, but still you notice that there is some movement. You see, you should always be prepared to play the in-swing at any level of cricket. And the irony with this sort of technique, or the faulty technique, is that whichever way the ball swings, if it comes in, your stumps are exposed. If it goes away, your outside edge is exposed. So you are in basically no position. You're just relying on your hand-eye coordination. And if that's not good,
then failures will keep following you. You noticed that Anwar Ali has just come back from that calf injury, and his run-up is like, what, 7 to 10 steps? He's using a lot of shoulder there because he used to have a proper run-up. Have a look at this. Yes, he's trying to preserve whatever muscle he got injured, and he's just using the small and short steps and trying to stay safe because the big games are coming and his presence is crucial. He never used to have a very long run-up, but this is the shortest I've seen him. He's trying not to probably put too much on his calf, but yeah, he's using a lot of upper body now. Yes, and his heel doesn't land. He just stays on the toe with the back leg. That's always been like that with him. I remember watching him bowl in the level 3 program of ICC, which happened in the NCA a year back, and he bowled in front of all the coaches. And I was very surprised to see that he only lands on his toe. He does not use his heel at all. And there are some bowlers who do that. But obviously, if your feet are not planted firmly, especially the front leg, then obviously the pace doesn't come that much because the solid base is required to push the ball with full force. This also could be the reason that his delivery stride doesn't really have a high jump for him to land properly on a full face of that sole. He just runs through it so he can afford a toe maybe. Okay, so end of the over. It's 11 gone, 96 for 5. So, as it gets cooler in the night, a cup of hot tapal tea becomes even more important and also tasty, especially when the weather gets a bit chillier. You can enjoy tapal tea in the tapal tea corner. Arif. Again, Shoaib goes straight. Again, he gets hit for a boundary, this time just landing inside that rope. Malik using a little bit of feet and straight bat. Again, this is poor captaincy. You can't put a young spinner in front of one of the best players of spin bowling in the country. And especially if you look at his runs, all the big shots have come against the spinner. And that is why changing the ends means nothing over here. It's just that you have to control him. Otherwise, Shoaib Malik can take his side to a total where Karachi might have a difficult time then. Yeah, we're just talking about how maybe not if Aftab Ibrahim, then probably Arif Yaqub takes someone on and try to increase or keep that run rate of 8.7 or 9 and over. This looks like a boundary, just landed inside the playing area. Yeah. Boundary given. Shoaib Malik's got 2 boundaries and 2 sixes in his 31 of 23. Just talking about this a while ago, good problem to have for a captain when you have too many options. So getting in Anwar Ali today, he's removed the left arm quick. Ghulam Mudassir, who is bowling well, and he's taken Shahnawaz Dahani and Sohail Khan, of course.
Down the wicket, he hasn't got hold of it. This is a chance. Deep cover, dives and drops. This is Shahnawaz Dhani. This was a moment where they probably could have closed the game. It was Malik's catch. Yes, and I wonder, leg spinner bowling, and Malik are more likely to go over the top, either to the head or maybe go extra cover. And you don't have one of your better fielders over there. And Shahnawaz Dhani, he reached there, but he was never confident with his body language. So it could have been a blinder, but not to be. And Arif Yaqub would feel very unlucky. That should be a 4. RF is being handled properly by the Sialkot batters. This time too much width. He's played it over cover. Yes, this is a sight that you see in cricket very often. If you give the batter a chance, the next ball goes for a boundary, although in this case the batter was different facing this delivery. But the same thing happened. Over-pitched and brilliantly hit. Once again. Why save so many bowlers of fast overs? Why do not captains like to go for the kill? Because after this, they don't have many batters. 2 overs for Shahnawaz Dhani remain, 2 overs for Sohail Khan. Danish Aziz, 2 for 6, 2 wickets. Amazing captaincy this. This time short in length. At least a 2. Can they do it? Or he's hit it too well. Just a 1. 11 of the over. 107 for 5. दो पावर हाउसेस का मुकाबला है और उसके लिए आने वाली जो क्रिकेटिंग नस्ल है वो भी मौजूद है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में और उसके साथ साथ ये गहमा गहमी अपने अरूज पे है। सियालकोट की एक शानदार लेगेसी रखने वाली टीम के लिए आज फतह समझ लीजिए कि नागुज़ीर है। अगर हारे तो फिर उनके लिए इफ्स एंड बट्स, अगर मगर और किनारे पे रहने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब कराची शायद एक शिकस्त को अफोर्ड कर सकती है, लेकिन इस मौके पे मोमेंटम को लूज करना उनके लिए खतरे का बायस होगा। मुख्तसर से रनअप के साथ कमाल बॉलिंग की है अनवर अली ने, 1 विकेट भी हासिल की है और उसके साथ साथ रन्स के फ्लो को भी रोक के रखा है। अच्छा स्टार्ट हासिल किया था सियालकोट ने, लेकिन उसके बावजूद रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स हासिल होती रही हैं, जिसके बायस अब तक शायद अपने टारगेट को डिफाइन नहीं कर सके हैं। आफ्ताब ने 1 ओवर फेंका है, 10 रन दिए हैं। उसके साथ आरिफ याकूब आज के दिन तवक्कुआत के बरक्स महंगे साबित हुए हैं। पिछले मैचेस में उनका सफ़र अच्छे अंदाज से जारी था। अनवर अली ने आज सरप्राइज़ किया। पिछले मैच से ये कराची वाइट्स की टीम का हिस्सा बने थे और गो के रनअप उनका आपको सरप्राइज़ कर रहा होगा, लेकिन उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है। जबकि दूसरी जानिब सोहेल, दहानी और दानिश तीनों के 2 ओवर्स बाकी हैं। तो कुछ फैसले ऑन देयर फीट लेने हैं असद शफीक को, अली यूनुस, जो कि बॉलर्स के इंतखाब के साथ साथ अपनी टीम को उठा के रखने के भी होंगे। ये पार्टनरशिप 22 रन की हो गई है और कुछ हौसले पस्त करती जा रही है। जी, तमाम तर नज़रें जो है वो शोएब मलिक पे होंगी कि कैसे इस इनिंग को फिनिश करते हैं। अच्छी इनिंग खेली है लेकिन साथ नहीं दे रहा कोई। दो रन की कॉल है और आज भी फिटनेस देखिए कि पहला रन इतनी तेजी से लेते हैं कि शायद ही पूरे नेशनल T20 में हमने इतना फिट क्रिकेटर कोई देखा हो। रनिंग बिटवीन द विकेट्स की अगर बात करें, ये क्वालिटी है शोएब मलिक की। इस बात पे इनकी तारीफ बनती है, दाद बनती है कि आज भी पहले देखी, नजर रखिएगा इनकी कि कितनी स्प्रिंट कितनी तेज है। पहले पहुंच गए हैं इवन नॉन स्ट्राइकर से शॉट खेलने के बाद भी। ये फिटनेस है, ये क्वालिटी है इनकी। लाइफ बिगिंस एट 40
बहुत सारे लोगों के लिए शायद उस वक्त तक पीक गुजर चुकी होती है, खास तौर पे खिलाड़ियों के लिए, लेकिन मोटिवेशन बने हुए हैं ना सिर्फ ये क्रिकेटिंग नेशन के लिए बल्कि इसके साथ साथ 40 क्रॉस कर जाने वालों के लिए। जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को फिट रखा है, चलती फिरती मशीन है, पिक भी जल्द कर रहे हैं गेंदों को। लेकिन दूसरी जानिब अनवर अली का कोटा मुकम्मल हो रहा है और दूसरी तरफ से ये क्या आरिफ याकूब के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर वापस आना चाहते हैं दानिश अजीज वहां से गेंद करने के लिए। मुख्तसर रन में लेकिन खींच के बॉलिंग की है अनवर ने। एक्सपीरियंस तो बहुत है, ज़्यादा शोल्डर से बॉलिंग कर रहे हैं, अब रनअप से तेज़ रनअप से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, इंजरी से वापस आ रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल है क्योंकि इससे आगे मैचेस तगड़े चलते होते चले जाएंगे और काफ़ी चांसेस हैं कि कराची वाइट सेमीफाइनल में पहुंचे तो तब बहुत काम आने वाले हैं अनवर अली। मुसलसल ऑन साइड की फील्ड का जायजा ले रहे हैं। शुएब मलिक के अंदर कोई लावा पक रहा है, क्या वो अब फटने को तैयार है? लेकिन अच्छी बॉलिंग के साथ मुकम्मल कर रहे हैं अपना कोटा। एक मरतबा फिर दूसरे रन के लिए कॉल की है, तेज भागना होगा अपने साथी खिलाड़ी को, लेकिन रन आउट करने में कामयाब अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। शुएब मलिक के सामने उस्मान एक कछुए किसी रफ्तार से लगे, हालांकि अपनी सी कोशिश भरपूर की, गुस्से से सीख पा हो गए इनके कप्तान शुएब मलिक दूसरे एंड पे। जी ऐसा होता है, शुएब मलिक के साथ जब आप भाग रहे हो तो आपको ऑन योर टोज रहना पड़ता है, आपको अपनी बेस्ट फिटनेस दिखानी होती है और यही शायद सोहेल खान भी यही कह रहे हैं कि आपको भी उनका ख्याल करना चाहिए कि हर कोई आप जितना फिट नहीं होता है, हर एक की इतनी स्प्रिंट तेज नहीं होती है। शुएब मलिक के देखिए स्प्रिंट बहुत तेज है, पहले रन बहुत तेजी से लिया, अच्छी थ्रो यहाँ पे खुर्रम मंजूर की जानिब से, बहुत लेट हो गए, शुएब मलिक पहुंच गए थे दूसरे एंड पे, आसानी से ये रन आउट हो गए। तो अगर शुएब मलिक के साथ खेलना है तो फिटनेस में पहले उनका मुकाबला करना होगा। उस्मान खालिद की विकेट हासिल कर ली है, जो कि यूं भी स्ट्रगल कर रहे थे, 7 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए, 2 चौके लगाए और अब ऑलराउंडर्स की या फिर एक तरह से टेल की शुरुआत हुआ चाहती है। याद रहे कि सियालकोट के लिए फतह शिद्दत की ज़रूरत वाली है, जबकि कराची अपने सफ़र को जारी रख सकता है इफेक्टिवली, लेकिन उसके लिए भी बड़ा क्रूशल मौका है। और अब नजरें होंगी असद शफीक पे कि वो दूसरी जानिब से किसका इंतखाब करेंगे गेंद के लिए। अभी भी शुएब मलिक क्रीज पर मौजूद हैं, जो कि अहम है सियालकोट के लिए। और आज अच्छी बात यह है कि वो जिस चीज़ को करना चाह रहे थे उनके दूसरे एंड पे साथी खिलाड़ी उसके लिए तैयार नहीं थे, जो कि सियालकोट के लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। हालांकि जो प्लान था शायद शुएब मलिक के साथ ज़्यादा बैटिंग करने का मौका ना मिला उस्मान को, लेकिन इस बात पे उनको रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। और शायद शुएब मलिक के दरमियान जो अब गुफ्तगू बिलाल आसिफ से हो रही है, वो पहले इस बात को जज कर लेते हैं कि शुएब मलिक के इरादे क्या हैं मशीन की तरह भागने के। या शायद बिलाल आसिफ उनको कह रहे हो कि थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, एक सेंचुरी बना चुके हैं इस लेवल पे, क्योंकि अब यहाँ पे शायद शुएब मलिक को दूसरे का भी ख्याल करना होगा कि क्या आपके साथ खेलने वाला उतना फिट है, अपनी विकेट तो वो बचा लेंगे, क्या दूसरे की विकेट भी बचा सकते हैं, क्या वो भाग के 2 रन ले सकता है उतने तेजी से जितना शुएब मलिक ले सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी तो है, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी होती है टीम के लिए। और इस बीच में दानिश अजीज आ गए गेंद करने के लिए, जिन्होंने विकेट टू विकेट बेहतरीन बॉलिंग की है। पहले 2 ओवर में महज 6 रन दिए थे और 2 विकेट्स के लिए। शुएब मलिक को देखिए कि उन्होंने पहले से इस बात का तहिया कर रखा था और लगा था कि उनके शायद पैर पहले ही हरकत में आ गए थे भागने के लिए, जब दूसरे एंड पे दूर भागे, लंबा सफर तय करना पड़ा और ये वो लिटिल मोमेंट से जो कि इस रन को चुरा के ले गए। हालांकि शुएब मलिक को बाज़ाहिर इस बात का बखूबी आइडिया था कि पहुंचना चाहिए, इसी वजह से चराग पा थे। शायद उनको भी लग रहा था कि उस्मान उतने ही फिट है जितने वो खुद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर भी ये कहूंगा कि थोड़ा ख्याल करना चाहिए अपने पार्टनर का कि क्या आपका पार्टनर जो है वो उसी फिटनेस लेवल पे है या नहीं है। यहाँ पे वाज़ेह फ़र्क था फिटनेस में। ऑल्दो अकील, जब आप शॉट खेलते हैं तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है 2 रन में वापस पहुँचना, लेकिन शुएब मलिक इतने स्मूथली, इतना आसानी से वापस पहुँच गए अपने फिटनेस की वजह से, लेकिन उस्मान खालिद पीछे रह गए।
निस्बतन शॉर्ट डिलीवरी लेकिन नीचे रही और इसको भी अपनी जगह के हिसाब से खेलने में कामयाब ना हो सके। और बार बार अब चूंकि इन्होंने बड़ी तादाद में अपने ऑप्शंस को इस्तेमाल किया है, 6 बॉलर आजमाए हैं, तो गो के अनवर ने अपनी उस कोटे को मुकम्मल कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ से कौन गेंद करने के लिए आएगा, ये अब एक और दिलचस्प अमर होगा कराची वाइट्स की खातिर। वैसे तो आप चाय की प्याली के साथ अपनी थॉट्स में क्लैरिटी ला सकते हैं, जब आप फील्ड में हो तो इस अंदाज का ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं होता है, लेकिन आपके जो सपोर्ट स्टाफ है वो आई एम श्योर कि उनको गाइड करेगा। एक 115 पे 6। हैप्पी बर्थडे टू आसिफ रिजवी। हर वक्त हर दम हंसते मुस्कुराते, लेकिन अब लगता है कि कुछ शर्मा से गए हैं। वैसे भी एक उम्र तक आप बर्थडे मनाते हैं, ये तो अभी जवान है और आई एम श्योर कि मज़ीद खुश होंगे अपनी इस बर्थडे पे। क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए यहाँ पर आज तो जा रहे हैं लो टीन्स तक दर्जा हरारत, और आज बड़ी ज़रूरी है यहाँ पर टपाल टी। और देख लीजिए कि उसको पी के ताज़ा दम भी हो रहे हैं, और यहाँ तो क्रिकेटर दोस्त भी बैठे हुए हैं जो कि असद शफी को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और जितने मशवरे इस जवां उम्री में आते हैं, पूरा गेम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं ये नन्हे से लोग कि क्या करना चाहिए था, और इस वक्त एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गए हैं दूसरी जानिब बॉलर को कि चेंज करके क्या लाना चाहिए। दहानी आगे गेंद करने के लिए। ये इंटरेस्टिंग है, दहानी ने अपने पहले स्पेल में 33 रन दिए थे 2 ओवर में। यहाँ से एक ऑप्शन हो सकता था कि आफ्ताब इब्राहिम एक विकेट भी हासिल कर चुके हैं, 10 रन दिए, वो आते और लैक ऑफ एक्सपीरियंस जरूर है उनके पास, लेकिन वो दरमियान के इन ओवर्स को निकालते। 19 रन का ओवर किया था इससे पहले दहानी ने। बिलाल, आसिफ, खुरम मंजूर, दहानी, ये तमाम सीनियर प्लेयर्स हैं अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के। कराची वाइट्स को पिछले मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उनके लिए विनिंग मोमेंटम के हवाले से बड़ा ज़रूरी है। बैक टू बैक मुकाबले उनके हौसलों को पस्त कर सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब सियालकोट के लिए तो समझिए कि सब कुछ दाव पे लगा हुआ है इस मुकाबले में। एक हार उनको अगर मगर से 2-4 कर देगी, उसके बाद भी 2 मुकाबले बाकी रहेंगे, लेकिन अफोर्ड शायद नहीं कर सकते इस मौके पर। चौके के लिए निकल जाएगी। बिलाल जगह पे खड़े खड़े खेले थे, लेकिन समेट लेंगे जहां से भी हासिल होंगे। रन चाहिए सियालकोट को। लकी बाउंड्री है, खुश नहीं है आजम खान। शायद नवाज धानी से खुश नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कि बीच में बॉल कीजिए। ये मुश्किल था थोड़ा, चांस आजम खान से थोड़ा दूर था बॉल, टो एंड पे लगा बॉल। शायद मोइन भाई होते तो वो पकड़ लेते ही। अब क्लियरली जानबूझ के शॉट को खेल के सिर्फ 1 रन हासिल कर पाए हैं। आने वाले बैट्समैन पे निगाह डालते हैं तो मोहम्मद अली, अब्बास और शोएब अख्तर आने को हैं, जो कि एक और हम शोएब अख्तर जूनियर अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, हालांकि आमतौर पर उसी प्लेयर के साथ कहा जाता है जिसका हम नाम कोई इस वक्त प्लेइंग सर्किट में हो। लेकिन अदरवाइज एक इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्ट नहीं भी हासिल हुआ था, लेकिन एक स्टेबिलिटी के साथ प्लेटफॉर्म मिल चुका था। हर खिलाड़ी ने इनको डबल फिगर्स में स्कोर दिए। हुरैरा कोई विकेट की थी जो कि अच्छी टच में लग रहे थे, लेकिन उसके बाद से अब एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं शोएब मलिक, जिन्होंने एंड संभाल के भी रखा है और आखिरी ओवर्स के लिए अपने लिए लगता है कि प्लेटफॉर्म सेट करना चाहते हैं, बैट थ्रू करना चाहते हैं पूरे 20 ओवर्स तक। ये उनको बिलाल आसिफ की मदद दरकार है, क्योंकि ये नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे हैं और उनकी T20 में सेंचुरी है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड है ऑन पेपर अगर आप बात करें जो लड़के खेल रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं हो पाई है सियालकोट से, क्योंकि अगर आपकी टीम का 8वें नंबर का प्लेयर उसने T20 में सेंचुरी बना रखी हो तो ये शो करता है कितनी डेप्थ है आपकी बैटिंग में। लेकिन रिजल्ट, जो मैच के रिजल्ट रहे वो इनकी फेवर में नहीं जा सके, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया। और अब विकेट हासिल हो गई शोएब मलिक को, बड़ा लंबा चेस करना पड़ेगा फील्डर को जब तक पहुंचे आरिफ याकूब। सिर्फ 1 रन हासिल कर पाए। पिछले गेम में
कमोबेश कोई 400 के करीब करीब तक दोनों टीम्स मिला के रन्स बनाने में कामयाब हो गई थी, लेकिन उस वक्त गेंद की उछाल अच्छी लग रही थी। अभी हमने कई गेंदों को, चाहे स्पिनर गेंद कर रहे हों या इवन अनवर अली, बड़ी लो होते हुए देखा है, और उसकी वजह से शायद शुएब मलिक ने अपने जो टारगेट है वो बहुत बड़ा नहीं रखा, जो कि पिछले गेम में आपको 200 के करीब पहुंचता हुआ लग रहा था पेशावर। अब लग रहा है कि सियालकोट ने 160 के आसपास का टारगेट ही जहन में रखा है फतह हासिल करने के लिए। स्ट्रॉन्ग बैटिंग यूनिट है, आजम है, खुरम मंसूर हैं, सर शफीक हैं, कराची पे निगाह डालते हैं। चौका लगा था दहानी के खिलाफ, लेकिन उसके बाद से अच्छा कमबैक किया। 7 रन दिए इस ओवर में, 5 बाकी, 122 पे 6। यूं ही अगर सफर चलता रहा तो पहुंच पाएंगे 160 के बियॉन्ड, और अगर अब अपने अटैक को अनलीश करने के लिए जाते हैं तो उनके पास मौका होगा कि वो 175 को भी टच कर सकें, लेकिन इस वक्त वो शायद दीवाने का ख्वाब ही लगेगा सियालकोट के लिए। शुएब मलिक ने तैयार कर रखा है कि वो दरमियान के ओवर्स में रन्स तेज़ी के साथ भाग के बनाएंगे, जबकि दूसरी जानिब से लगता है कि दानिश अजीज़ के इस कोटे को मुकम्मल करेंगे, और ठीक सोच नज़र आती है। दरमियान में उनको रोक लिया था इब्तदाई 2 ओवर्स में कामयाबी के बाद, लेकिन उसके बाद से कुछ रन ज़रूर लीक किया एक तरफ से आरिफ याकूब ने और दूसरी तरफ से धानी ने, लेकिन ये क्रूशल होगा उनके लिए कि अब वो बॉलर्स को टारगेट करने की कोशिश करें। 163 का जहन में रखना चाहिए, क्योंकि अगर 182 की तरफ जाते हैं तो कहीं 163 से भी हाथ ना धो बैठे हैं। इसलिए शायद क्योंकि ये स्लो लो पिच है, और हमने देखा है कि वक्त के साथ साथ ये पिचेस स्लो होती चली जा रही हैं, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हो रहे हैं, 2-2 मैचेस हो रहे हैं हर पिच पे, और काफ़ी दिन से ये टूर्नामेंट चल रहा है, तो हम देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट जो है वो पिचेस पे आ रहा है, स्लो और लो होती चली जा रही हैं। ऊंचा खेलने का फैसला किया है और भरपूर किया है, पूरा जेट फ्यूल दिया, जाती चली गई गेंद, बिलाल आसिफ के अंदर जो लावा पक रहा था फट पड़ा। क्या साथ देना होगा, और अगर इस तरीके से दे सकते हैं साथ तो क्या ही बात है। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, पिच ऑफ द बॉल पे पहुंचे, अच्छा स्विंग और अच्छा एरिया चूज किया, सीधा खेलने गए हैं। ये सेफ जोन होती है, और यही हम बात कर रहे थे कि अगर आपका 8वें नंबर का प्लेयर जिसने सेंचुरी की हो T20 में, तो बहुत डेप्थ होती है बैटिंग में। अच्छा कमबैक, लेंथ को चेंज किया रीड करते हुए कि शायद बैकअप करने के लिए जाएं अपने पिछले शॉट को। दिलचस्प होगा ओवर, पहले गेंद पे इतना बड़ा छक्का लग जाने के बाद दानिश अजीज आखिरी ओवर में कैसे कमबैक करेंगे। फिर आगे निकले हैं, फिर खेलने का मौका मिला है, ज्यादा विट नहीं थी, लेकिन चौका फिर भी निकालने में कामयाब रहे। एक और बाउंड्री इस ओवर की, और बिलाल आसिफ ने अब गरजना बरसना शुरू कर दिया, दूसरा चौका। जी हाँ, थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो रहे हैं दानिश अजीज अपनी पेस में। आप भी स्लो बॉल किया, दूर बॉल किया, और बिलाल आसिफ जो कि खुद भी एक स्पिनर है, उनको अंदाजा है कि ये इस लेंथ पे कैसे पहुंचना है, कितनी जल्दी पहुंचना है और कहां खेलना है। ये बेहतर है, थोड़ा मिक्सअप करना होगा अपनी लेंथ को और अपनी पेस को। दानिश ने कमाल बॉलिंग की थी इस ओवर में, उनके बॉलिंग फिगर जरूर खराब हुए हैं। वाइड भी कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ अब ये मोमेंटम माने रखेगा कि किस अंदाज से आखिरी 4 ओवर्स में लेके जाते हैं, जिसको करने के लिए सोहेल खान के पास 2 हैं जो कि नजर ही आता है करने के लिए आएंगे। दहानी के पास 1 ओवर है, आफ्ताब के पास 3, और शुएब मलिक कप्तान को भी ये देख के हौसला मिला होगा कि बिलाल आसिफ ने अगर उनको ये प्लान मिला है तो वो उस पर पूरा उतर रहे हैं इस वक्त। एक मरतबा फिर विट निकालने की कोशिश की, लेकिन आफ्ताब के पास गेंद गई, तो 4 ओवर बाकी। सियालकोट के लिए स्टेज सेट, 135 पे 6।
135 for 6. It's 4 overs to go. With Malik in, Sialkot will be looking to post a decent total. At least another 35 will take them to 170. Malik has gone straight. Just the one bounce over the fence. What a clean strike. He didn't try to overhit it, but the shape that he kept was amazing. Excellent stroke. That's the class Malik holds. It looked like he's playing on a very different surface against a very different opposition. Just through the line, as easy as you like. Good follow through, good balance, transfer of the weight. You can watch it all day long. Effortless. Dances down the wicket, preempting that. And there you go. This is Malik at his very best. Brings up his 50. Clever piece of cricket there. First preempting what Sohail was going to bowl. Sohail is not amused. Sarcastically applauding his fielder. But this moment is for Shoaib Malik. Well played, Malik. An innings of authority. That's what he's done. Taking the challenge up. It doesn't matter whatever is happening on the other end. 41 deliveries for his 50. But the way he played it, he made it look very easy. That's the potential class that Malik holds. It's like Malik versus Karachi Whites. Malik is toying with Sohail Khan. Another boundary, just moving inside the line and opening up that offside for himself. 10 of the over already. Bad delivery from Sohail. He had that man inside the circle, mid-off, and then you're pitching it up outside off stump. He's not going to spare that. Have a look at that. Just allowed the ball to come, collapsing his back knee to get that elevation. He's taking on the challenge. No change in field. That mid-off fielder is still up in the ring. Mid-wicket is pretty straight now on the fence. Long on his back. He went short. That was expected. Misdirected though. Good heat on it, but the line wasn't right. Sohail trying all sorts of things here to keep Malik silent. He's quite deep in his crease. The line was wrong. He's trying to surprise him, but you have to be very careful against Malik, because a batter of his caliber, he has ample time to put those shorter ones away. In the meantime, he's brought the fine leg up in the ring. Mid-off has gone back, and now mid-on is inside the ring. Change of plan maybe from Sohail Khan. Hard length. Shoaib is not happy with himself. But this is a good contest. Two very, very experienced cricketers going against each other. The best thing about Malik is, obviously, we talk about a batter needs to have 3 different shots for one delivery. And that's why maybe he's just disappointed that he could have put that away. The shadow practice he did after that shot was just that pickup shot through the mid-wicket. There's a huge gap there. Just thinking he might have missed an opportunity for another boundary. Knocked him over. Sohail Khan has the last laugh. And he's not shy to let Malik know that who was the winner there. Malik, after playing a good hand, has been undone by Sohail Khan. A lot of action on this occasion. We've seen Sohail Khan animated. Wild swing from Malik. Usually he's very calculated. No worries there. Never is when Sohail Khan is bowling. But have a look at that. That might have been probably a release shot. It did keep a bit low. But Sohail Khan always targeting the stumps. He's animated. He's loving it. He has redeemed himself. Finally, Malik shows over. But what an innings. Single-handedly taking the challenge for Karachi Whites. Shoaib Malik on 54, 146 for 7.
Muhammad Ali, not known for his batting. Best of 9 not out. Just needs to hang in for those remaining, 19 deliveries. Sialkot desperately need to get up to that 170 to challenge Karachi. That was beautifully bowled. It was tailing in. Ali just got the bat down at the last minute. Good ball up front. That's what Sohail Khan can do. But this was a huge wicket. It did keep low. Malik just slightly taking eyes off the ball. Otherwise, he's very disciplined, calculated, and executes it to perfection. Come on, that's what Sohail Khan said. 147 for 7. Three to go. Run a ball will get them to 165. That's the minimum Sialkot needs. I thought they were good for 170 or more even if Shoaib Malik had stayed there. But this man is known to take wickets even in this format. And that wicket could have made a difference of 15 to 20 runs already. Call is for 2. Nicely timed by Ali. And they need to communicate. There are ample space on both sides of the wicket. You should be looking to target turning those singles into doubles, and whenever a boundary option is provided, they need to capitalize it. Once again, nicely timed by Ali, collecting crucial runs. 150 has been brought up, a mini milestone for Sialkot. Yeah, if only they can push a little bit more. This bat looks familiar. That's not surely Ali's bat, because I don't think he would have hit that many balls. I think it belongs to Usher. Red all around, not a single space left on that board. If Ali as a fast bowler is hitting that many balls, then probably we'll see him get promoted. Always good to see some fans in the stadium. Still the 2 enclosures have been opened for them. Well, Ali has played 4 deliveries and he's shaped just like a top order batter. That's good cricket, really good cricket, just rotating the strike. Now what that does is actually put pressure on Aftab, because he's unable to culminate that dot ball. Now if he makes any changes in length and line and he makes an error there, probably Bilal or Ali would go after him for the boundary. Bilal had other ideas. Just dragged it a little bit with the bottom hand. Couldn't keep his shape for long enough. But this is the over that Sialkot would have been looking for if Shoaib was there, because after that, Shahnawaz Dhani and Sohail Khan has got 1 over each. So that was the over, and so far, Aftab has done a good job. Yeah, he needs to close it strongly. Just 1 more delivery. Don't give any boundary options to them. And that's exactly what Ali and Bilal would be looking, especially Ali now. Well, that's not a bad shot again from Ali. Just the single. He'll keep the strike, and Bilal wouldn't mind that because Ali has looked good.
with 7 of the over. 18 gone, 150 for 7. Well, that's the bat that Ali's playing with and playing like a top order batter. And like we said, that's the owner of this bat because he was batting with it earlier. Moment. Marina, did your bat ever look like that? Oh yes, plenty of them. Against bowling machine, that's what we do. Ali is a test cricketer. He's played test cricket. Actually, he was playing to save a test match for Pakistan against England. In the meantime, Sohail Khan will look to finish the innings off. He likes to clean up the tail. That went very, very close to the off stump. It's not going to be easy against Sohail Khan because he's got those mix-ups. He's got good yorkers, back of the hand cutters, all that variation and experience. He knows when to deliver them. I'm just going to ask you, Marina, did you ever give your bat to a tail-ender to play in the match? All right, Ali's telling me he's not a tail-ender. What a beautiful strike that was. Tailing in, and he was just into it on a flash, kept his shape, and any top order batter would have been proud of that shot from Ali. Not sure if Sohail was trying to bowl a yorker, but pitching it up to someone like Muhammad Ali, it actually wasn't pitch up, it was half volley, and he played it through the line. That's a beauty. Hold the pose, young guy. Well, Moment's contribution with the bat, whatever it was, is even better now since Ali has got his bat and added valuable 10 runs. Make it 11. I remember one of my teammates who was a fast bowler asked me once, because I bought a new bat and it was very solid, had a good stroke. And I said, over my dead body, mate. I don't know if she was impressed with you or not. Maybe she would have batted as well as Ali. You should have trusted her, no? No batter can just loan away their bats. Oh, that went close to that off stump. Sohail Khan is never short of a word. Completely bamboozled Bilal. Just keep an eye on those fingers, they roll off. Sohail Khan is very experienced. The action doesn't change a lot, and that actually makes it difficult for the batter to pick it up, but you need to keep your eyes on the hand. Just the last moment he does that. And the length is accurate, so it's even harder for them to put away. Now mid on, mid off, back. Fine leg and third are inside the ring. Bilal aiming for big hit. Not Ganley at all. Just a single. Good finish towards the end of the over from Sohail Khan after conceding that boundary. Still one to go. You cannot premeditate as a batter against Sohail Khan because he makes it up nicely. Early on there was some cutters, some yorkers as well. This time good pace, hitting the deck hard. So you need to read that delivery, the length and line pretty quickly to react. It's very hard to playing those improvised shots premeditately. It's gone big. Fielder's getting underneath it and takes it. Umar bin Yusuf is a safe pair of hands.
And Ali is disappointed. He thought he struck it quite nicely, but the field was well set. He actually did, but Umair, he's very quick through. He's picking up the ball quickly again, back of hand this time. It's never easy. Off the front foot, never got perfect timing on it. He did overrun Umair bin Yusuf, but somehow managed to get hold of it. He's disappointed. He was enjoying his time out in the middle. But now, time to take the walk back. 11 gone, Muhammad Ali. 160 for 8. Muhammad Abbas is the new man in. Another test fast bowler for Pakistan, replacing Muhammad Ali. Yes, sure, he enjoyed his batting. Never seen him smile that big with ball in hand, as Aftab has cleaned him up. First delivery. And Bilal Asif, who was aiming for a big hit, has been castled. Wild and blind swing by Bilal. But Aftab was right on the money. No worries there. Very disciplined bowling side, this Karachi Whites. Have a look at that. That's a perfect Yorker. He's all over the place. Bilal Asif is trying to make some connection. Wild swing from him, but celebrations for Aftab. Bilal walks back for 22. Sialkot 160 for 9. Shoaib Akhtar is the new man in. Yep, don't be fooled. The Rawalpindi Express hasn't taken his retirement back. He's not coming out of retirement. This is a youngster from Sialkot. Joins Abbas. Both of them haven't faced a delivery. Oh, Azam Khan. He let it go through his hands. You have to wait for the umpire's signal. They come back for the second run. Azam fails to collect the ball on the second time as well. Still waiting for the umpire's signal. Yeah, leg bars for sure. They've pushed hard for that second one. And it's good intention from the young guns. Shoaib and Abbas. Still have to have a look at that run out. Did Azam grab hold of the ball cleanly? I thought initially that he couldn't gather the ball. Oh, he did maybe. He was just throwing it onto the stumps. But Shoaib Akhtar had made his ground. One of the easier decisions for the third umpire. Not out is the decision, just stealing a couple. Leg buys though. Aftab. His aim is just to bowl full and straight. That was a bump ball. But dot ball at the moment is the second best result because he's looking to clean up the last wicket. He kept things very basic. And clarity of mind is important, especially in 10th overs. He knows what those tailenders are looking. Again, Fuller
Will push for 2, but it's not available this time. So from 146 for 6 to 164 9 rather. That meant that total the projected score would come down by 10 to 15. Actually, Shoaib Malik's wicket alone had made that difference. Karachi would be pretty happy up to now. Though you have to give it to Sialkot. They're still trying and accumulating whatever is on offer, despite being very good death bowling there from Aftab. Yeah, the intention is there. It's very hard to put away those Yorkers. He's been executing it perfectly. Aftab with some decent pace, right in the block hole, aiming the stumps, no room given whatsoever. Cross-seam delivery. This time, let's see what he can do. Once again, nicely struck. Asadeh is quick and accurate enough to stop them from getting the second run. Good over from Aftab, just a 5 coming off it. And Sialkot will finish on 165. A very competitive total. A while ago, you would have felt that they were in for a few more. But I think runs on the board. And they will challenge Karachi in the run chase. There have been a lot of hiccups for Sialkot in this innings, posting 165. Karachi, obviously, they've got ample experience in their batting as well. They'll be happy, probably content. And they need to bowl and field really well to keep Karachi out of the game. But as far as batting is concerned, they managed to stand up in bits and pieces. So let's see what they can do now in terms of bowling. That man again amongst the wickets. Man of the moment, Aftab is downstairs with Akil Samar. Over to you, Akil. आफ्ताब बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने 19 साल आपकी उम्र है और बड़े ज़बरदस्त सेक्शन के साथ आप गेंद कर रहे हैं अब तक के सफ़र को कैसे डिसाइड करेंगे और आज की इस बॉलिंग को सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूं कि यहाँ पे आज अच्छी बॉलिंग हुई और इस पे मैंने मेहनत की है और मेहनत को अप्लाई यहाँ पे किया और कोचेस ने भी बहुत काम किया मेरे साथ तो अप्लाई किया अल्लाह पाक ने कामयाब किया आफ्ताब हमें पता चला कि आपके वालिद शायद देख नहीं सकते हैं तो उनके नाम आप कोई पैगाम देना चाहेंगे क्योंकि आपका पहला इंटरव्यू है आई एम श्योर कि उनका एक ख्वाब होगा आपको इस लेवल से और आगे परफॉर्म करते हुए देखें जी बिल्कुल मेरा अब्बू देख नहीं सकते आपकी बात बिल्कुल सही है ये आज की परफॉर्मेंस मेरे अब्बू के लिए और ये पहली इंटरव्यू भी मैं उसके नाम करना चाह रहा हूँ इस टोटल को कैसे देख रहे हैं 166 का टारगेट है आपकी टीम ने जो डिसाइड किया होगा टीम मीटिंग में उसके लिहाज से है या कुछ ज़्यादा है जी पिच तो बिल्कुल सही चल रहा है इंशाल्लाह चेस हो जाएगा चेसिबल स्कोर है तो इंशाल्लाह हो जाएगा Very well done. Thank you. थैंक यू
That was the run out. He's very quick, Shoaib Malik, but need to consider his partner as well. The show continued with Bilal as well. He came and take on the attack. Back to Karachi bowlers, but this time Suhail Khan redeeming himself. It was a big over. The show continues. The attacking approach did get some rewards and risk as well, but some brilliant bowling by Aftab. Death bowling at its best. He managed to pull out those Yorkers perfectly. Going into the break, Karachi will feel very confident of getting that target, 166. We'll find out how they go about it when we come back in just about 5 minutes. Oh, picked up nicely. That was a great pickup shot. That's gone high in the air. This should be out. Inside the circle. Yes, gone. It's got the toe in, but that's enough. Wow, wow, wow. और you spoke too soon, Ali, क्योंकि मोमेन आउट हो गए हैं और बोल्ड हो गए. This one goes over. Beautiful hit. Malik has gone straight. Challenge. No worries as far as the surface is concerned. It seems a very decent one. We've got ample experience. Khurram Manzoor, Asad Shafiq, Ahmad Alam has been brilliant in batting as well as in fielding. We've got Azam Khan, the powerhouse.
It's a decent total, but they need to bowl really well and maybe feel better than that. They've got the potential. They've got Mohammad Abbas, Mohammad Ali. That's the fast bowling department, along with Shoaib Akhtar, Bilal Asif, Usman Khalid, the spinners operating. Cute faces in the crowd, enjoying this cricket. It's a breezy evening here in Karachi. Some young guns. These stars will definitely inspire them for future. The skipper, Bilal Asif, leading his team onto the field. Mohammad Ali Daisy, the new ball. .30, that's the required run rate for Karachi. Shouldn't be a big problem for them, especially when you've got Azam Khan in the batting lineup. He can turn the game at any moment. But right now it's the openers walking out in the middle. Ahmad Alam and Khurram Manzoor, both attacking cricketers. They love to take on the challenge. They'll definitely enjoy their stroke play. But what can Sialkot bowlers do? That's the bigger question. If they manage to get early breakthroughs, they might push them a little on a back foot. That's exactly what Bilal Asif is talking about with Mohammad Ali. He's a decent bowler. Had a good season, longer format, but it's time to deliver. They need to win this game, Sialkot. No introduction needed. Khurram Manzoor, a prolific batter for Karachi Whites. Look at that, numbers. He's got a decent strike rate as well. Leverage is healthy. Ample of experience. Has won many games for Karachi single-handedly, and this young gun has impressed all of us. Ahmad Alam. He's technically sound. Still early days for him. It's just 9th match. Experience with the ball as well. Mohammad Ali. He's got 8 wickets so far in 11 wickets in 8 matches. He can pull some really good line and length early on with the new ball. Shouldn't be a problem for Karachi Whites. All set. And the chase is on. Khurram and Ahmad will be facing two very similar kind of bowlers, Mohammad Ali and Abbas. And get that swing going. Slightly condition dependent bowlers, but they're very talented, yes. And can move the ball around and make you work hard for your run, especially when that ball is new. Inside the power play, quite a few options available to Sialkot in terms of bowling styles. Karachi will surely want to cash out on the power play, try to get ahead of the opposition while the circle is on. And for that, they'll need him to fire. So far, good length by Ali, just hitting the deck hard. To be careful against Khurram. Won't stay quiet for long. He's tried to flick that. Mohammad Ali is
like adamant. He is pleading for that. Good timing in that shot, but straight to the fielder. Sialkot will have to be very clinical in that power play, try not to let the opposition fly away with a good start. They do have a lot of batting. Umair bin Yusuf after this, Asad Shafiq, Azam Khan, Danish Aziz, and now Anwar Ali. He is also part of it, can finish it well. Suhail Khan can hit a few. It's not getting the timing right off the surface. Khurram Manzoor just swinging it very early and hard. Again, missed the ball. Those are the hard lengths, but the line probably need to be correct. What I like about Khurram Manzoor is that his helmet's got that sleeve properly fitted. That's the best thing. It does something to me, I don't know why. When the batter comes and it's just like you're wearing someone else's size. And I don't know why they do that. It did annoy you a lot in Qaid-e-Azam Trophy, didn't it? Yes, I have lived through some painful times. So that's one good thing. It's just certain satisfaction. It's like just someone pulls the bed sheet off from one side of the bed and just leaves it that way, and you can't touch it. Nice, a direct hit, and ricochets off allows them to go for an overthrow. First over ends with 2 runs on the board. Karachi do have a little bit of luxury for these early overs to be a little quieter, but you don't want to drag it through the middle overs. Yes, they have all sorts of batting. Azam Khan, Umair bin Yusuf, Asad Shafiq, and with, as you mentioned, Anwar can hit big. Suhail can hit big too. But again, I think it's more about the individual effort. Khurram probably, he seemed a little shaky, not getting the timing right in most of the shots. But once he gets settled in, that's when he takes over the game. And probably he'll be looking to do that tonight for this chase. Even you look at Ahmad, how properly his helmet looks. I think they've got a very strong manager, team manager, and makes sure everyone's properly dressed, their shirts are tucked in like that. Should look like a proper sportsman, athlete. Abbas got more experience than Muhammad Ali. Down the wicket and cracker of a shot. Boundary for Ahmad. Dancing shoes on for Ahmad. He's not going to hang back. Not much pace on offer by Abbas, but the length, he picked it up really quickly and just shimmy down the track. It's a beautiful shot. Have a look at that. Just creating some room to free his arms. Good balance. It's very important to keep your head stable whenever you come down, especially against fast bowlers. Got the elevation right and the placement. And that's good cricket. Soft hands, playing close to the body and rotating strike straight away.
Got a 50 and a Player of the Match award here on this ground, the last appearance, Khurram Manzoor. And there is a certain level of responsibility on him as being the senior. The captain wants him to give them a good start. Has not been amongst runs as he has been. He's a very prolific scorer across his career. But things have been difficult. I had a word with him. He was saying that it's not that easy to put the ball away. The surfaces have been a bit challenging. He's made room and he's played that over mid-on for a boundary. Smartly done by Abbas also. He followed Khurram, but still Khurram managed to get underneath it. It wasn't a bad delivery. Following him was a good option, but just the length that allowed him to get underneath. Khurram is looking to score. He's looking to look positive. This was just brute force. No timing, but just the bottom hand coming in. Good follow through. And that's the best area to hit. If you want to enforce the shot, go straighter, especially on these surfaces. A bit of bat, surely, otherwise he would have been in trouble. That's the end of 2 overs. With that leg by, score is 12 for no loss. This is what I'm talking about. That's the pace of the surface and also some change-ups that are coming up. He's not been able to time it. He's gone and hit his abdomen. Seen that a lot in this inning especially. It never arrived. And Khurram Manzoor needs to judge the pace of the surface, obviously. You need to delay your shot ever so slightly to get that timing right. Looks very keen to get off the mark to score runs. Khurram Manzoor, normally he's very calm. Yes, he brings that force into his shots, but need to be more aware of the surface. You could see his wrists were aiming that leg stump and leg slip area, always going down the leg side. It goes further down after hitting the seam. Well kept there. Asad Shafiq wanted 140. He said even 150 is good. This pitch has been good through the day. 166 maybe 12 or 15 more than he wanted, but still you'd say that you'd fancy your chances chasing a score of 166 down. 166 to win with the kind of batting they have, all the way down to Sohail Khan, Khurram Manzoor, Ahmad Butt, Umair bin Yusuf, Asad Shafiq, Azam Khan, Danish Aziz, Anwar Ali, Sohail Khan. So if you don't chase 166, then I think Sialkot bowlers have done a very good job in containing it with that kind of batting available. Sialkot just need to keep things quiet, especially for the power play. So far, Ahmad and Khurram have been struggling. We've seen that even when Sialkot was batting, you had to change your plans and your bat speed as well. So Khurram probably, he'll go after anything fuller and at times very shorter, but the hard length, that's where he's struggling. Anything within the stumps at the hard length,
hasn't been able to put them away or even play with confidence. And that's what Ali has been doing. He carries a reputation, loves to score quickly, score big, and score often as well. Seems that in this season, especially in white ball cricket, normally he does it with ease. He's been struggling, as you mentioned, you had a word with him, the surfaces are not that supportive for batters. I think he's seeing two Khurram Manzoors. He's noticed the angle which he's trying to bowl is anyway facing towards fine leg. Look at that. I think he's wanted to bowl a slow bouncer or something. He's just messed it up completely. Yeah, there you go. It's just slipped out of his hands. It's very unlikely of Muhammad Ali. Normally he's very impeccable in terms of length. Not sure what his plan is. Maybe he's trying to cramp Khurram for room, but again the length, it's very short. Almost just in front of him. That's where it pitched. When bowler doesn't offer you a lot of pace, that makes things even more difficult. This one again just coming back in. Khurram did angle it, like he didn't chop it on to the stumps. You just get a feeling that Khurram is making up his mind what he wants to do before the bowler is even getting into his delivery. He's trying to move away and open the offside. There are two men on the onside, which can always play there, covering the line of the ball. More like that, a little more stable. You just feel that he's moving too much around in that box. And then again, he's getting eventually late on the shot. 3 gone, 18 without loss. Yeah, I think with Muhammad Ali, you do expect that he's going to bring the ball back into you, being a right-hander. What you can do is, if you're struggling with that line and length and cramp of the room, you can always shuffle towards off-stump. Just keep your head still and try to connect the ball before your eyes, a little earlier. Keep your weight on your front foot. And just try to work it into the leg side, as you said. But what he's doing, he's staying back in his crease, or at times just moving towards that leg stump, and that creates more problems for him because the ball is coming back into him. Bowler change, Usman Khalid now. Some spin being introduced by Sialkot. You do the homework against certain batters, then you get the fielders right. Like what Shoaib Malik, or rather, he's not the captain, Bilal Asif, I should say. He's got that long off very wide to these two because they play a lot of extra cover. They play a lot of shots, making room. And then there's one mid-wicket, of course, on your screen. Shoaib Malik himself. Just trying to slow things down with the spinner, but they're not going great guns anyway. There, you just get a feeling it's not really coming onto the bat. Or the two openers from Karachi are just in too much hurry. They're trying to hit it with some immense power rather than trying to time it. Again, there is slowness off the surface. You need to delay your shot slightly. And that's not what they've been doing.
Yeah, rare bad ball. Full toss, still protection there. So runs are gettable here. 177 is chased down. Scored 180 Pindi against Abbottabad. And Pindi also got 168 in the Super 8 stage against Sparta. So these are two successful highest chases. You just hope that frustration doesn't creep in these two batters. You're absolutely right when you said that he's trying to use more force than to wait on the ball and play proper cricketing shots, more timing. 10 balls since a boundary in the power play. There, this time he gets bat on it. And that's got a huge, very healthy maximum to end the over. 4 gone, it's 28 for no loss. That will give some confidence to Ahmad Alam. This time it was shorter in the length, Usman, and he waited for that ball to come close. Good extension of arms right out of the middle of the bat. And picked it up nicely and it sailed over the boundary. 28 and 4 without loss. boys. अंदर रे हो मोमिन रंगारंग शाम है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में, जहां पर कराची वाइट्स अपने शिकस्त के बाद वापस आना चाहती है विनिंग मोमेंटम की जानिब, जबकि दूसरी जानिब सियालकोट के लिए समझ लीजिए कि फतह नागुज़ीर है। और पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर बड़े शॉट के साथ अपने आप को गेम में रखने की कोशिश की है। और अब आ रहे हैं तजर्बाकार बिलाल आसिफ, फौरन मंजूर स्पिन बॉलिंग को खेलने के आदी हैं। अब तक मिसक्यूज शॉट बड़े खेले हैं, लेकिन अब वक्त आन चला है कि वो भी हाथ खोलने के लिए जाए। लंबा चेस है बाउंड्री लाइन पर हुरैरा के लिए, एक ही रन मिल पाएगा। ये अच्छा मुकाबला है क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है बिलाल आसिफ, और ट्रेडिशनली कराची के बैटर स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अहमद आलम ने इस टूर्नामेंट में एक सनसनी सी मचाई है अपने टैलेंट की वजह से, और इस सनसनी को अब छक्के के सूरत में बदलने के लिए गए। बड़ा छक्का, जाइए इसको लेकर आइए। यह अहमद आलम का शॉट है, बिग सिक्स। इन स्टैंड्स पे चली गई, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने मनूवर किया, विकेटों के बिल्कुल सामने आ गए। ये कोई खराब बॉल नहीं था, लेकिन आप देखिए कि जो कलाइयों का इस्तेमाल किया है, पोजीशन में जल्दी आ गए और उसके बाद मेहर कलाइयों को उन्होंने एक झटका दिया और बॉल काफी दूर गई। ज्यादा फॉलो थ्रू नहीं था इसमें, शोल्डर नहीं था इस शॉट में, और बिल्कुल ही हाथों को स्ट्रेच भी नहीं किया। तो कलाइयों की मदद से गेंद को राह दिखाई। लाजवाब स्ट्रोक। एक मरतबा फिर उसको रिपीट करने के लिए गए मुख्तलिफ शॉट, लेकिन एरिया भी वही और नतीजा भी मैक्सिमम। जान पड़ गई है कराची में और रोज पड़ती जा रही है सियालकोट के अरमानों पे। बैक टू बैक सिक्सेस, एक मरतबा फिर किसी हद तक प्रीमेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन बॉल को भी देख रहे हैं क्योंकि ये खिंचा हुआ बॉल था, लेकिन उन्होंने इंतजार किया बॉल के आने का और अपनी पोजीशन, उसी पोजीशन में रहते हुए एक मरतबा फिर कलाइयों का इस्तेमाल किया। इस मरतबा थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल था, इंतजार किया बॉल के आने का, अपने शॉट को डिले किया। ये क्वालिटी है अहमद आलम की। और अब तीसरा हासिल करना चाहते थे, पावर प्ले का फायदा मिल जाएगा और एक और टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री में क्रॉस कर जाएगी। आग लगा दी अहमद आलम ने कराची में। मुसलसल 3 बाउंड्रीज, इस मरतबा चौका। जबरदस्त पिटाई, पहले ही उन्होंने इरादा कर लिया था पावर प्ले है, तो फील्डर कोई नहीं था डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। हालांकि ये बॉल उस तरह बल्ले के बीचों बीच नहीं आई जिस तरह पहले 2 हिटें आई थी। काफी देर बॉल हवा में रही, लेकिन बाउंड्री लाइन से चंद कदम अंदर गिरी और उन्होंने अब बिलाल आसिफ को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और अब 5 फील्डर ऑफ साइड पर हैं। क्या बिलाल लाइन चेंज करेंगे? नहीं, ये शाम मात की है। कराची का फरजंद आज बड़ी शॉट लगाने के लिए तैयार है। 50 अब कराची की, और अहमद का कॉन्फिडेंस आफाक की बुलंदी से बातें कर रहे हैं।
और डगआउट में खुशी की लहर दौड़ गई। बिलाल ने जो भी किया इस ओवर में, अमाद के पास उसका जवाब मौजूद था और इस मर्तबा गेंद बल्ले के बीचों बीच आई। पिछला स्ट्रोक उन्होंने रिपीट किया, लेकिन ज्यादा बेहतर टाइमिंग, ज्यादा कुव्वत और बेहतर नतीजा। और एक मर्तबा फिर उससे भी बड़ा और भरपूर छे। बिलाल आसिफ को जगह नहीं मिल रही छुपने के लिए। इस शाम का महंगा तरीन ओवर कराची में अम्माद आलम ने इशू को सेटल कर दिया। पावर प्ले के अंदर ही 29 रन वाला ओवर मुकम्मल हुआ। ये शायद टूर्नामेंट का सबसे महंगा ओवर होगा। इस मर्तबा फिर खिंचा हुआ बॉल था। ये देखिए, अम्माद ने बिलाल को बता दिया कि आप कहीं पे भी बॉल करेंगे तो मैं उसे छक्का मारूंगा। एक दफा सिर्फ वो चूके जब 4 मिले और पहली सिंगल के बाद जब वो स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने बिलाल को बिल्कुल सांस लेने का मौका नहीं दिया। क्या शाम है अम्माद आलम की, आंखें चमक उठी हैं नौजवान 25 साल खिलाड़ी की। और ये क्रिकेट ही कर सकता है, आपको अचानक से एक मोमेंट ग्लोरी का दे, क्योंकि बड़ी मेहनत है अम्माद आलम के इस करियर में और मैं उस बात को उससे निकाल नहीं सकते। लेकिन T20 क्रिकेट का खासा है कि आप पिछले 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, सर्किट में मौजूद हों, लेकिन ये एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, वो जो स्पार्क दे देता है, उसके बाद आपको 4 चांद भी लग जाते हैं और मौका भी बड़ा मिलता है। और ठीक आज ही के दिन अगले हफ्ते PSL का ड्राफ्ट है और मुझे यकीन है कि काफ़ी स्काउट्स जो हैं वो इस वक्त देख रहे होंगे। और अम्माद ने जिस तरह का स्ट्रोक प्ले किया है इस टूर्नामेंट में, उन्होंने ज़रूर तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है। ये बिलाल आसिफ हैं, आज कप्तान भी हैं, इसलिए जो उनकी दुर्गत बनी वजह तौर पे वो इस पे काफ़ी मायूस थे ओवर के अख्तिताम पर। लेकिन शायद कहीं कहीं आपको हाथ खड़ा करके बैटर को दाद देनी चाहिए कि सर आज आप बहुत अच्छा खेले, और अम्माद वाकई बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और 2 कदम आगे आकर अपने विकेट को गंवा दिया। कहां जा रही थी इनकी परवाज और कहां पड़ाव आ गया। बड़ा नुकसान कराची को। क्या कहिए, ये क्रिकेट है। पिछले ओवर में जिस चीज को छुआ अम्माद ने वो सोना हो गई और यहां पहली गेंद पर आउट हो गए। जो उनकी इनिंग्स फास्टेस्ट 50 की जानिब गामजन थी, सीधा फील्डर के हाथ में उनका ये लॉफ्टेड ड्राइव चला गया, थोड़ा सा गेंद से दूर रह गए। और सबसे ज्यादा सुख का सांस बिलाल आसिफ ने लिया होगा। शानदार इनिंग्स अम्माद की, 43 सिर्फ 16 गेंदों पर, 58 पर 1 कराची। अभी उमैर बिन यूसुफ के आने से लग रहा है कि एक जेट तैयारे को एक टर्बो प्रॉप ने रिप्लेस किया, लेकिन तैयारे ये भी हैं। और देखना यह है कि कराची अब क्या सेंसिबल अप्रोच की जानिब जाएगा। 87 गेंदों पर 108 रन बनाने के लिए उमैर बिन यूसुफ अब एक्सपीरियंस बैटर्स में शुमार होते हैं कराची के, गो के वो भी अभी भी नौजवान हैं। 23 मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं, लेकिन बड़ी विकेट हासिल की है दूसरी जानिब उस्मान खालिद ने। और उमैर ने जो पिछला मैच यहाँ पे कराची का हुआ था नेशनल बैंक स्टेडियम में, बहुत ही धुआंधार इनिंग्स उन्होंने भी खेली थी और मिडिल ऑर्डर में आए थे। तो ये उनका रोल अब नया है, लेकिन आज फिर 1 डाउन आ गए। जिस तरह का प्लेटफॉर्म मिला है, शायद उन्हें भी लाइसेंस देकर भेजा गया है। अपील बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, लेकिन अंपायर को अब मुतासिर कर गए। उस्मान का गेम चेंजिंग ओवर, सियालकोट जाग उठा 2 विकेट्स के साथ। कराची के प्रवास में एक और बड़ा पड़ाव, दोनों खिलाड़ी वापस। बैक टू बैक विकेट्स किसी भी रन चेस को डिरेल करने के लिए एक कैटलिस्ट का किरदार अदा कर सकते हैं। इस मर्तबा तजर्बेकार खुर्रम मंजूर स्वीप करना चाहते थे, बॉल विद द आर्म थोड़ा सा अंदर आया और स्किट किया, उनके अंदाजे से ज्यादा तेज।
खुर्रम मंजूर की वापसी हुई, कदम काफी आगे निकाला था। अब कीपर और बॉलर कन्विंस थे, अंपायर ने वक्त लिया और फिर खुर्रम मंजूर को रवाना कर दिया। 11 रन बनाकर आउट हुए। कराची 59 पर 2। असद शफीक इस ड्रामाई ओवर में चीज़ों को समेटने के लिए आए हैं और उनके पास ये एबिलिटी, टैलेंट, एक्सपीरियंस सब मौजूद है जो कि कराची को यहाँ से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चेस की जानिब ले जा भी सकता है और दूसरी जानिब एक और विकेट उनके उम्मीदों पे पानी भी फेर सकती है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन के लिए 7.5 रन पर ओवर के औसत के साथ चल रहे हैं। उस्मान खालिद के अलावा दीगर बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं। अब्बास ने एक ओवर में 9 रन दिए, मोहम्मद अली ने 2 में 7। असद शफीक 124 मैचेस T20 क्रिकेट, उनके पूरे एक्सपीरियंस का मुंह बोलता सबूत नहीं है। 1.5 दहाई से क्रिकेट में नुमाया। गेम चेंजिंग ओवर बन सकता है जो कि अपने अख्तिताम को पहुंचा। पावर प्ले भी खत्म 60 पे 2। ड्रामाई ओवर था और इससे पहले एक एक्शन से भरपूर पावर प्ले जिसमें इब्तिदा के ओवर्स में एक सन्नाटा तारी था लेकिन 29 रन बनाने में कामयाब रहे। उससे पहले बिलाल आसिफ के खिलाफ और उसके बाद उन्होंने चार्ज किया था। तो ये 2 विकेट्स बैक टू बैक और कैसे देखिए ज़मीन पे हाथ मार मार कर उस्मान ने अपील की और फाइनली ठीक डिसीजन अपने हक में हासिल करने में कामयाब रहे। हौसले बुलंद है अचानक से और अब ये बिलाल आसिफ की कप्तानी और साथ शोएब मलिक जो कि अपना तजर्बा लामहला उन तक मुंतकिल करेंगे उसका सवाल है और अचानक से टेल अप हो गई है। शोएब अख्तर गेंद करने के लिए आए हैं। ये आपने नाम के तकाजे के तहत वो कोई बैक टू बैक विकेट्स दिला पाएंगे गो के शायद उनका पेस नहीं, अभी नौजवान है। आई एम श्योर कि आगे चल के अपने पेस को बेहतर भी करेंगे लेकिन फिल वक्त सूरत हाल का तकाजा मुख्तलिफ है। मजीद आपको दबाव डालना है और इसके लिए डॉट बॉल शायद एक डिफरेंस क्रिएट कर सकें। दूसरी जानिब असद शफीक आए हैं, कप्तान है, बड़ा तजर्बा उनके पास मौजूद है, आस्किंग रेट इनके कंट्रोल में और साथ साथ उमर बिन यूसुफ को भी उनको गाइड करना होगा। पिछले मैच में जिस अंदाज का एक्शन उन्होंने यहाँ पे दिखाया था उसके बाद उनके इरादे भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। इस फील्ड जो कि अफोर्ड नहीं करेंगे, हर गेंद पर दबाव डालना पड़ेगा सियालकोट को। जबरदस्त पुल शॉट था, सीधा फील्डर के पास गया और शायद वो हाथों से नहीं रोक पाए लेकिन जाके लगी है। ये उस्मान खालिद थे, बहुत ही करारा स्ट्रोक था। उमर बिन यूसुफ शॉर्ट पिच बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। उस्मान ने महसूस की इस शॉट की ताकत को। दूसरे रन के लिए भी आना चाहते थे असद शफीक लेकिन इस वक्त ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एक और विकेट इनके लिए बड़ा मसला बन पाएगी। जैसा आपने कहा नाम शोएब अख्तर हो तो जरूर जहन में आता है रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम। जिस तरह की वो फास्ट बॉलिंग किया करते थे वो आज तक उनकी जो आइकॉनिक स्टेटस है या सुपरस्टार स्टेटस है वो बरकरार है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया क्रिकेट में। ये जानना पड़ेगा इन शोएब अख्तर से कि इनका नाम रखा गया, क्या वो इसके पीछे भी कोई कहानी है या इनका फैमिली नेम था या कुछ ऐसा, कम ऐसा होता है। और ये शोएब अख्तर का एक्शन है, तवील का आमद है, थोड़ा सा ऑफ साइड की जाने गिरते हैं और फ्रंट नी भी ब्रेस नहीं है। मजीद छोटी छोटी चीजों पे काम कर सकते हैं, थोड़े से अपने शोल्डर स्ट्रॉन्ग करें तो यकीनन पेस में भी इजाफा हो सकता है। बेहतर अलाइनमेंट और बैलेंस।
यस विकेट्स की तलाश में इस टूर्नामेंट में, और एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपको उन शहरों से जो कि सियालकोट से भी रिलेटिवली स्मॉल कम्युनिटी से आते हैं, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है। और उससे पहले हम उन खिलाड़ियों के वाले जा रहे थे जो कि क्रिकेट के ज़रिए से अपने ड्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं। और चूंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं इस बिजी सीज़न की शुरुआत का, जिसमें ख़ास तौर पर इन सब खिलाड़ियों की नज़रें आने वाले टूर्नामेंट्स पर मरकूज़ होंगी और इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज़ को किस अंदाज से वो टीम के लिए कन्वर्ट करते हैं, ये तमाम इन कोचेस का और उसके साथ साथ सीनियर खिलाड़ियों का गाइड करने का बड़ा काम होगा। सो फार सो गुड। शोएब का इस स्टेडियम में पहला ओवर 5 रन दे गया, 65 पे 2। शाह फैसल कहते हैं अगर चाय आप पीने के लिए जाना चाहें तो कई मील का फासला तय करने के लिए भी कोई मजाका नहीं है, और ख़ासतौर पर ऐसे माहौल में। लेकिन अगर आप नेशनल बैंक स्टेडियम में मौजूद हैं तो ये टपाल टी कॉर्नर है, और वैसे भी हर तरफ टपाल टी का राज है, टेम्परेचर भी गिर रहे हैं, जैकेट्स भी ऑन है, तो इससे अच्छा मौका होगा नहीं चाय का। बिल्कुल, हमें मीलों दूर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम यहाँ से भी देख सकते हैं ये टपाल टी लाउंज, और इसमें काफ़ी रौनक रहती है पूरा दिन। जिस तरह का आपने मौसम का जिक्र किया, थोड़ा ठंडा हो गया, अब जैकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ऐसे में एक कप चाय और वो भी टपाल का, क्रिकेट का लुत्फ दोबाला कर दे। और क्रिकेट काफ़ी कम्पेटिटिव है, रन स्कोरिंग के हिसाब से कराची आगे और 2 विकेटें भी कम लूज़ की हैं, लेकिन सियालकोट ने बोर्ड पे टोटल सजा दिया, उनकी कंसर्न नहीं है। अब कराची को सोचना है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है। 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का मुकाबला है, जहां पर इस वक्त तक असद शफीक ने प्रिवेल किया है। अब्बास जो कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करने के लिए शोरे रखते हैं, और इनके खिलाफ देखना होगा कि असद शफीक किसी हीरोइक्स के लिए जाएंगे या फिर इसी अपॉर्चुनिटी के तहत चलेंगे। फील्ड वाइड स्प्रेड है, असद शफीक जैसे बैटर के लिए ज़्यादा मसाइल होने नहीं चाहिए कि वो स्ट्राइक रोटेशन के लिए तरजीह करें। दोनों टीमों में बड़ी तादाद में टेस्ट प्लेयर्स मौजूद हैं। सियालकोट की टीम में शुएब मलिक, बिलाल आसिफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास टेस्ट प्लेयर्स हैं। फिर कराची की टीम में आपको खुरम मंजूर, असद शफीक, सुहेल खान। निस्बतन स्लो डिलीवरी थी जिसको गाइड करने के लिए कामयाब रहे हैं। ये कराची के लिए जो प्रॉब्लम्स आन पड़े हैं पिछले मैच में शिकस्त के बाद, ये टूर्नामेंट वाइड ओपन हो सकता है कि अगर कराची को यहाँ पे शिकस्त होती है, फिर आपको जो ये कशाकश है टीम्स के दरमियान टॉप 4 तक पहुंचने की, वो पेशावर जो कि अब से कुछ देर पहले एक और फतह अपने नाम करने में कामयाब रहा, बाकी तमाम टीम्स के दरमियान रह जाएगी। और ये एक अच्छी चीज़ होगी ऑब्वियसली क्रिकेट के फैंस के लिए, जहाँ पर हम पुराने फॉर्मेट की जाने वापस गए हैं। गो के इब्तदाई स्टेज में शायद आपको लगा था कि कई खिलाड़ियों की कारकर्दगी में वक्त के साथ बेहतरी लाने की ज़रूरत थी, यहाँ पर बड़े क्लोज मुकाबले हो रहे हैं। एक टीम कंफर्म होगी सेमीफाइनल के लिए, और लाहौर वाइट्स का तकरीबन टूर्नामेंट यहाँ से ख़त्म ही समझिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं उनके, हालांकि मैथमेटिकली नहीं, लेकिन क्योंकि बाकी टीमें उनसे जो ऊपर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, इसलिए अब 6 टीमों के दरमियान मुकाबला है मेरे ख्याल में कि वो 3 पोजीशंस को ग्रैब करें। आज अगर यहाँ कराची जीतती है तो 6 पॉइंट्स के साथ वो इस सुर्ख लकीर से ऊपर आ जाएंगे। लाहौर ब्लूज जिन्होंने पिछले 2 मैचेस जीते हैं, उन्होंने कुछ दिलचस्पी पैदा की है, और ये जो टॉप 4 एक तरह से सेटल लग रहा था 1-2 दिन पहले, उसमें लगता है कि लाहौर ब्लूज चैलेंज करेंगे, और उनका बैलेंस बहुत अच्छा इस वक्त बन चुका है, स्पेशली जो उनकी बॉलिंग लाइनअप है, और बैक टू बैक 2 विक्ट्रीज हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ कराची, एबटाबाद, इनको एक नज़र रखनी होगी अपने कंधे के पीछे कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी स्टेज पे लाहौर ब्लूज इन्हें साइड पर लगाकर खुद आगे निकल जाए। तो ये टूर्नामेंट में दिलचस्पी रहेगी लीग स्टेज के आखिरी गेम्स तक। वाइट का बोनस मिलेगा, असद शफीक ने आके बात की थी उमर बिन यूसुफ से, और ये जो एक सन्नाटा सा तारी है बाउंड्री लगे हुए, उसके बाद शायद अब ये अपने गेयर को चेंज करने के लिए 16 गेंदें हो चुकी हैं जब से ये धुआंधार इनिंग्स खेल रहे थे अम्माद, उसके बाद से खामोशी है। गो के अभी भी शायद एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 8 विकेट्स के साथ इनको कम से कम हर 2 ओवर में एक बाउंड्री को अपने जहन में रखना होगा। डिलीवरीज की हैं, विकेट भी मिली थी, लेकिन अब तक असद शफीक ने तरजीह दी स्ट्राइक रोटेशन को। आजा सर आजा, इजी। थोड़ा देखा है कि
जो जेन्युइन शॉर्ट पिच डिलीवरी हो उसको तो उमैर अच्छा खेलते हैं। ये जो बैक ऑफ अ लेंथ है यहाँ पे उतनी एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स हासिल नहीं कर पाते, क्रैम्प हो जाते हैं। इस मरतबा भी ऐसा लगा, खुशकिस्मती से ऑन साइड पर दायरे में कोई फील्डर मौजूद नहीं था कैचिंग पोजीशन में। हमने इस टूर्नामेंट में इन्हें आउट होते देखा है इस तरह के शॉट पर। एक और अच्छा ओवर सियालकोट ने अपने आप को इन द हंट रखा है फतह के लिए। 5 रन दिए 70 पे 2। The boundary takes the score to 74 now. Scoring is going on at around over 8.5, but that one over has dented them a little bit, where they got 2 wickets. Both the openers were sent back. Just guiding it down to third. Not enough pace on that, so allowed him the time to open the face. Umair has done well. Batted at 6 and played a job of a finisher here. And now he's come back to his regular position at number 4. Punch this time through the covers and looking for 2. Not there. It's a good start from Karachi. Credit Ahmad Alam, who played a wonderful knock. 14 balls for his 43. And he was exceptional, especially against Bilal Asif, hitting him for 4 sixes in 1 over. 29 runs of that over. That onslaught in that 1 over that you spoke about, 29 runs, has given them that momentum that they are very much in a good position. 90 of 69 now. Asad Shafiq has a little breathing space. As 2 new batters are at the crease, they can just allow themselves an over and a half to settle themselves down. Not more. This one is a no ball, as signaled by the umpire, and will be a free hit. So 2 runs off this ball, and the next one will be a freebie, and Asad Shafiq, the experienced batter of the 2, to take the advantage. There it is on your screens, the front foot, and it did go over the line, and good decision by the umpire, the on-field umpire. So the fine leg is up, mid-off up in the ring. All fielders in the ring coming from the edge of the circle, knowing that it's a free hit. Wow. Furniture all over the place. Not a wicket, but what a wild swing. Very unlike Asad Shafiq. It's not out, of course, because it's a no ball, but he's just gone ahead with a wild swing of the bat.
Another one this time. So getting to the end of the 9th over, 79 for 2. So Karachi are in a position where they need not to panic. That one big over of Bilal Asif has put them into a commanding place so far. And if they don't lose wickets, just play the sensible bit, they'll be good to win this game. But they do need a partnership to develop. Wow. How did he pick that one up? Slicing that over short fine because the bat was angled that way. That's really fast legs and into good quick positions. Over completed 83 for 2 after 9. Look at that. From outside off stump. Yes, converting a good ball into a boundary. Umair bin Yusuf showing his skills. So 83 it is for 2 after 9. It's amazing how batters these days have worked hard on certain shots and stroke play for different formats. He's a batter who likes to bat long. Umair bin Yusuf in the 4-day format and even in the 1-days, to curb that desire of playing such shots in the longer format and then come here and start doing that. This is what you expect from good professionals. They do what is required. And he also, we saw him play at number 6, adapt to the role over there. And he normally bats number 3 and 4. It's all about that age-old saying that certain batters who bat long, they make you work hard as a bowler to get their wicket. But then to change game face on and you become this kind of a batter where there's a lot of risk involved in playing such shots. You're almost giving the bowler a 50-50 chance to take your wicket. I don't know if it's the demand of the format, or it's just the way you got to play to be noticed. I think it's a bit of both, and I don't know what made the keeper to start jumping on this ball, because the way he started to appeal, it's quite funny actually. This time it's been flicked, but the short fine leg will cover it up and will be only one. I've noticed that certain keepers are very chirpy and they do that to just put the batter off, because you see Umair bin Yusuf lost the ball while he missed it. He didn't know where it went. And just to appeal and to stop him from taking that single. But I think it wasn't that. It was really, he believed it was out. Karachi Whites need 80 of 62, still in their hands with 8 wickets to go. And Salman, we were just talking while you were having your dinner. And look at that batting lineup. I'm showing it to you, people can't see it. After this is Azam Khan, Danish Aziz, Anwar Ali and Sohail Khan. So there's a lot of batting. Once again a single to third and 10 overs gone, 86 for 2. Are you camera shy, Salman? Because look at that, look at that batting down to Sohail. Yes, Ahmad Alam, 43 of 16, the man who took that 29 runs of Bilal Asif. And he is the main reason why Karachi are 87 for 2 after 10. His knock of 43 was really quick time. And Umair and Asad have the luxury to now get settled in and then go. But the amount of batting they have, if they'll be sensible, they should achieve these runs easily.
Good running. Back for two. Putting pressure on Muhammad Ali. He had to come in from long on to collect that ball. Time and again you see around the world when the camera comes onto the dugout, you stop your actual conversation, you're sitting straight. Somebody will be fixing their hair, somebody will not be smiling. Look at the guy at the back, the trainer, he's serious. He's in a good position in the team. Some just talk, nothing. They just start having conversation, making gestures as if they're planning something. I like the coach is very happy. Yes, camera brings out different behaviors from different individuals. Some people are camera shy, and some people bring out their absolute best when they are in front of the screen. They are different people, and in normal life they are shy. If it's the crowd, they'll start jumping, waving to their families. But when it comes to professionals, they want to look serious. He's always chewing a gum, Azam Khan. Some sort of exercise going on. That ball has hit him knee or maybe just shin. That can be very painful, so he's just taking a walk out. Ashir Mahmood, if I'm not wrong. Asad Shafiq said that you were happy batting first also had you won the toss. Do you feel it's getting a little tougher second time around? No, it's getting a little more, they're just not getting that timing right. I think they're trying to hit the ball too hard. That's what they're trying to do, and Abbas with his experience is not giving them any width or that particular length where they can play the shot easily. So they have to time the ball. And the good thing, the things that differentiate Peshawar from other teams is between balls of boundary balls, they strike, they rotate strike, and just look at that stroke. And ball within the stumps, ball that should be played on the front foot, and it's a premeditated kind of a risk taken, and that also only for one run. At max, this ball could have gone for one run. And that's a poor choice of a stroke. And Abbas' speciality being a test and a first-class bowler, hitting the top of off. That is what you expect from Abbas, and he delivers. This will worry Karachi Whites a bit because Umair has been in good form. That dismissal can make them go a little shaky. Umair bin Yusuf 17, it's 89 for 3. Danish Aziz is the new man in, and he certainly in the last couple of games has started to get runs and also take wickets. So he's somebody who will be confident, and Karachi need a partnership. They shouldn't lose any more wickets because only they themselves can mess this chase up. There is no demon in the pitch, and it's just coming onto the bat as it was earlier. No swing, no seam, nothing at all. So 59 matches for Danish, 51 innings. Was that an opportunity? First ball. I think this was the height and his follow through that he just couldn't grab it properly. Somewhere around his chin, if I'm not wrong. Coming straight back at him. A bit quicker than his liking, but should have been taken at this level. A bowler's played so much of cricket. Just have a look. It's just as if it was too quickly onto him, and yes, he closed his eyes as well, which obviously did not help. So a lucky break for Danish.
You talk about Sialkot, 11 overs gone, 90 for 3. They've gone to two similar kind of bowlers. One is more experienced, Abbas, and then Mohammad Ali. With the new ball swing, condition dependent. As a captain, would you like a little more variety rather than having two very similar kind of quicks? Medium paces. I don't know about that options that they have. That's the wicket of Umair. As you said, top of off. Yes, so Hebullah with the left arm quick. He's quicker than them. He has a good change of pace and a good short ball as well. But they opted to go with the more experienced Abbas. And Abbas has done well. He's taken the wicket of a batter who was in form. Now Bilal Asif needs to deliver. All right, he had a pretty poor over the first one. Credit to Ahmad Alam for hitting those brilliant shots. Yeah, captain's got to tell his men that he's here. Not because of he can give away 29 in an over, because he's been experienced. He's represented Pakistan. He's actually opened also with the bat. Almost. Don't know if Danish should be coming down the wicket like that, trying to replicate Ahmad Alam. That is well bowled. 3 dots and putting a bit of pressure on Karachi, who still requires 76 of 51, and they need a partnership. Wickets falling will keep them in check and also may create some panic. And this one is over, extra cover, decently timed. The fielder is coming around, and well, this will be a 4. Seems as if Hamza Nazar, although he has thrown it back, but the umpires will definitely check. Bilal Asif is not happy. Yeah, rightly so. You get a feeling he should have stopped that. He was able to flick it back, but not completely, and he dragged the ball with him onto the ropes. So the bad news will come to Bilal Asif soon, when the official decision will show it's a boundary. 3-dot ball and then a 4. There you go. The story is when the ball hits his knee or boot, yeah, and he's in contact with the rope. And as it is, he's pushed the rope back. And 4 has been given. Could be 2 here. If they run hard, could be 2 here. But with Danish, no. It's rightly sent back, though he was ready for that run. Yes, Danish is not very quick, neither agile. So that's a good call. Keep him safe because he can bat well, but he's not the best of runners between the wickets. The last ball of the 12th over, Bilal needs to finish this over and keep it to maybe another single, or a wicket would be great for him. And yes, just a single, so 6 off this over. And Karachi are 96 for 3 at the end of 12. अच्छा शफीक अब तक मौजूद हैं, लेकिन उमैर बिन यूसुफ की विकेट के साथ एक मरतबा फिर गेम वाइड ओपन है। 48 पर 70 रन बनाने के लिए एक मरतबा फिर आपको लिटिल पार्टनरशिप्स के साथ कई बड़े हिट्स चाहिए होंगे। कराची दूसरी जानिब शायद अपने आप को इस वक्त ऐसी पोजीशन में कंसीडर करे जहां से इसको मैसिव कमबैक करना, और इसके लिए शायद कुछ बड़े हिट्स भी आना चाहिए। एक मरतबा फिर दूसरे रन की कॉल है, वापस मुड़ के शायद वो क्रिएट कर सकते थे अपॉर्चुनिटी, लेकिन दानिश अजीज को अब कमान संभालनी होगी। और अब्बास जो कि शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, महज 18 रन दिए हैं। उमैर बिन यूसुफ की ऑल इंपॉर्टेंट विकेट भी हासिल की है, उनके खिलाफ शायद अब तक इस हिकमत अमली के तहत ना आ जाए।
कराची के ज़्यादातर बैटर्स एक ही गलती कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से खेलने जा रहे हैं शॉट्स, इसलिए टाइमिंग आउट है ऑलरेडी। कुछ ज़्यादा पेस ऑन ऑफर है नहीं सियालकोट की तरफ से, थोड़ा सी स्लोनेस भी ज़रूर है सरफेस में। और हमने देखा है कि जिस तरह जब भी अमाद आलम ने वेट करके शॉट खेली वो छक्के के लिए गई है। फ्लिक करके और साथ शॉर्ट गेंद के भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अपने फीट पे लाइट हैं, दानिश कदमों का भी इस्तेमाल अच्छा करते हैं। असद शफीक को शायद अपने मिजाज के बरक्स खेलना पड़ा है इस पोजीशन में, जहां पर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया है, लेकिन अब तक उनकी इनिंग्स में 14 पे 13 बने हैं, कोई बाउंड्री शामिल नहीं है। और पिछले 2 ओवर से आप इस बात की अर्जेंसी को सेंस कर सकते हैं कि वो तलाश कर रहे हैं इन बड़े शॉट्स को। तलाश जारी ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा बैटर्स को कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं रन रेट में। इंतजार किया और गेंद को खेल दिया है सीधा फील्डर की जानिब, जबरदस्त कैच मुकम्मल किया। इब्तिदाई गलती पे रिकवर किया और फौरन अपने आप को पोजीशन में लाते हुए इस ऑल इंपॉर्टेंट कैच को मुकम्मल कर लिया। कराची को एक और बड़ा धचका, कप्तान आउट। काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी असद पे, थोड़ा सा लैग कर रहे थे, लेकिन इस बार चैलेंज को कबूल किया, लेकिन रिजल्ट वो उस तरह के हासिल नहीं कर पाए। अब्बास ने बहुत ही नपीतुली बॉलिंग की है, एक बार फिर देखें ज्यादा पेस ऑन ऑफर नहीं कर रहे, इसलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ये अच्छा कैच था, थोड़ा सा ओवर रन कर गए, स्लिप भी हुए, लेकिन अपनी नजरें जमाए रखी गेंद के ऊपर और कैच मुकम्मल करने में कामयाब। ये बड़ा झटका जरूर लगा है, असद शफीक को भी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि गेंद मिल गई थी, लेकिन थोड़े दाएं या बाएं होता फील्डर के तो शायद 4 रन हासिल कर लेते। 13 बना के असद शफीक वापस 98 for 4। लोकल फेवरेट हैं आजम खान, उनके लिए सिचुएशन अब आप समझ लीजिए कि टेलरमेड है। 45 पे 68 रन दरकार हैं, जो कि आजम खान अगर रह गए इनिंग्स के आखिरी ओवर तक तो शायद वो एक ओवर पहले इस गेम को फिनिश कर दें, लेकिन ये मौका भी देगा सियालकोट के उनके विकेट को परचेज करने के लिए जाएं। अब्बास ने ड्रीम स्पेल किया है T20 क्रिकेट के लिए, ख़ास तौर पर इस विकेट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। दूसरी जानिब जमा उम्री में असद शफीक से ज़्यादा मैचेस खेल रही हैं आजम ने, 134 रन मुकम्मल कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट इनका 150 को छू रहा है, सेंचुरी भी बना चुके हैं, और उसके अलावा क्लब क्रिकेट डे इन डे आउट इस अंदाज की पिचेस पे वो खेलते हैं। लेकिन ये कराची के सर्वाइवल का भी सवाल है, और उनके लिए जो एक्सपेक्टेड था 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर वेट कर रहे हैं कैच का। अच्छा मौका इनके पास अपनी आई को सेट करने का, क्योंकि T20 क्रिकेट है मरीना, और उसमें शायद बैट्समैन आमतौर पे उतना ज़्यादा वक्त लेते नहीं है सेटल होने के लिए और फ़ौरन से टैकल ही जाते हैं, लेकिन कम से कम अब्बास के खिलाफ वो इत्मीनान से खेल सकते हैं। इससे पहले विकेट भी कीपिंग भी कर रहे थे, लेकिन असद शफीक जो कि फाइनली ऑफ द बैक फुट शॉट एग्जीक्यूट करने के लिए गए, कनेक्शन भी मिला, लेकिन अच्छा कैच लिया इन दी एंड। मेरे ख्याल में आजम को शायद ये जो कंडीशंस है वो सूट करेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा चेस करने जाते नहीं, बॉल को आने देते हैं, हिटर हैं इसलिए गेंद को करीब आने देते हैं। जिस तरह की सिचुएशन है ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा रन रेट 7.8 का चल रहा है, रिक्वायर्ड 9.2 है, ये गेम को पलट सकते हैं एट विल। शाहजेब भट्टी थे कैचर, 100 भी मुकम्मल हो गए हैं कराची के, और इनकी वजह शोहरत दोनों हाथों से गेंद करने की है। सो इस स्टेडियम में उनको फीचर करने का मौका नहीं मिला, लेकिन आई एम श्योर कि अगर सियालकोट सरवाइव करता है तो वो भी अपने जौहर दिखाएंगे। शायद 2 ओवर पीछे इनको ये 100 मुकम्मल करने का मौका मिला, खास तौर पर अमाद जब बैटिंग कर रहे थे उस वक्त तो लग रहा था कि ये 8वें ओवर के करीब ही इसको मुकम्मल कर लेंगे। तेज भागे आज, और इसके साथ शानदार स्पेल खत्म हुआ अब्बास का, जो कि सुख का सांस लेने का मौका देगा कराची को। 101 पे
बॉलिंग ऑप्शन मौजूद हैं अभी भी सियालकोट के पास। अब बिलाल आसिफ किस तरह रोटेट करते हैं, स्पेशली आज़म और दानिश के मिडल में होने में, राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन भी है। इम्पोर्टेंट ओवर्स होंगे मिडल में। खुद आए हैं, खुद जिम्मेदारी ली है, महंगे साबित हुए थे। अमाद आलम ने आड़े हाथों लिया था इन्हें। आप कैसे स्टेबल कर पाएंगे इस पोजीशन को, ये देखना है। ये बिलाल आसिफ का पहला ओवर था जिसमें खुर्रम मंजूर के आप शॉट को मिन्हा कर दीजिए और उसके बाद 1 2 3 4 बड़े शॉट्स लगाने के लिए गए अमाद आलम, गो के उसके अगले ओवर में आउट हुए, लेकिन 29 रन और ब्रेव कॉल है। आज लीड शायद एक ऐसा मोमेंट हो सकता है कि जो उनके जहन के बैक एंड में हो और वो एक मरतबा फिर गलती करवा बैठे। आजम बड़े शॉट के लिए पर तोल रहे हैं, पिछले बेहतर नहीं हो रहा। दानिश अजीज के लिए सिर्फ एक चौका लगा पाए अब तक। जब आपके दूसरी साइड पे आजम मौजूद हो तो ज्यादा समझदारी की बात यह कि सिंगल लेके उनको स्ट्राइक पे लाएं। हर गुजरती गेंद के साथ ये दबाव बढ़ता जा रहा था। अगर ओवर के इब्तिदा में आप हिकमत अमली तरतीब दे लेते हैं तो फिर शायद ये ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अब चूंकि दबाव आ चुका था तो उनको वो कॉम्पनसेट भी करना था अपनी इब्तिदाई गेंदों को डॉट खेलने के बाद। आस्किंग रेट पर हमने दोनों निगाहें रखी हुई हैं। आजम को कम से कम एक रखनी पड़ेगी। 10.22 पे पहुंच चुका है। गो के T20 क्रिकेट है और उसमें 2 शॉट्स की मार हो सकता है, उसको 10 से नीचे लाना। कमबैक बिलाल आसिफ का इस ओवर में महज 3 रन दिए और अपने बॉलिंग फिगर्स को भी बेहतर किया। 104 पे 4। बिजनेस एंड है टूर्नामेंट का और इसके साथ साथ शब के इस पहर लंबी रातों में अपने आप को तरोताज़ा रखने के लिए क्रिकेट तो आपके साथ है ही, लेकिन साथ साथ टपाल्टी और कुछ इंपॉर्टेंट मामला पे गुफ्तगू भी। आई एम श्योर कि कराची की स्ट्रेटजी को तरतीब दे रहे होंगे कि किस अंदाज से लेकर चलना है, और जितनी सोच का मुजाहरा ये लोग कर रहे हैं शायद अब तक दानिश ने नहीं किया। और दोनों के दरमियान भी आके गुफ्तगू हुई है। आजम और दानिश बहुत इनको एक दूसरे के साथ खेलने का मौका मिला है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को भी जानते हैं और रिस्पेक्ट उन्होंने ज़रूर दी है बिलाल को, जिनको वो देखभाल के खेल भी सकते थे और ख़ासतौर पर आजम चार्ज करने के लिए भी जा सकते थे। लेकिन अब एक नए बॉलर उनके सामने होंगे जिनको आप इस बात को तस्वर कर सकते हैं कि इससे पहले खेलने का मौका नहीं मिलेगा या मिला नहीं था, तो वो इंटरेस्टिंग होगा किस अंदाज से मुकाबला करते हैं। अब तक अच्छी गेंद की है शोएब अख्तर ने। 2 ओवर में 18 रन दिए और उस वक्त गेंद करने के लिए आए थे जब बिलाल आसिफ को 29 रन पड़ चुके थे। पावर प्ले के दहाने पे उन्होंने अपना पहला ओवर मुकम्मल किया था। और आजम की कुव्वत फाइनली उनको पहला चौका दे जाएगी। बड़ा मुश्किल गैप था और मार्जिनली इसको क्लियर करने में भी कामयाब रहे। बड़ी जरूरत थी कराची को इस चौके के लिए। अच्छी शॉट आजम की, और इसी में खासियत की बात कर रही थी कि ये सिर्फ एक पावर हिटर नहीं है, जेन्युइन बैटर के तौर पर भी खेलते हैं। स्ट्रोक्स इनके पास बहुत ज्यादा मौजूद है। बैकफुट पे इस बार टाइम किया और फिर आप देखें कि कनेक्शन बॉल का जो है वो तकरीबन अपनी आंखों के नीचे लिए ये गेंद को आने देते हैं, इसलिए इनके लिए उतनी मुश्किल कंडीशंस नहीं है बनिस्बत उसके जो बल्लेबाज चेज करने जाते हैं। इनको जरा सोच समझ के बॉलिंग करनी पड़ेगी। इम्तिहान है ये बहुत बड़ा शोएब अख्तर का। गुड क्रिकेट, लेकिन अपने आप को मुश्किल में धकेल दिया था। आजम इससे पहले ऐसे एक क्रिटिकल मौके पे लाहौर के खिलाफ रन आउट हो चुके हैं जहां से मैच का 5 पलटा था और कराची उनकी विकेट को अफोर्ड नहीं कर सकता। अनवर अली जो कि डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट बैटर भी समझे जा सकते हैं, उन्होंने बॉलिंग तो लाजवाब की, उनका आना बाकी है। और उनके बाद सुहेल खान का जो कि बड़े शॉट्स लगा लेते हैं। आरिफ याकूब ने भी क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक में जहां पर उनको मौका मिला है बड़े शॉट्स लगा रखे हैं, लेकिन इस प्रेशर गेम में जहां पर 58 रन का फासला तय करना हो, उनको बड़े सफ़र के लिए आप मुकम्मल तौर पर ओपन ग्राउंड नहीं दे सकते हैं। इससे पहले इस पार्टनरशिप को लंबा जाना होगा कराची की खातिर।
लकी बाउंड्री मिल जाएगी, यस। आजम जो कि अब तहिया कर चुके हैं ऊंचा खेलने के लिए, जोरदार शॉट्स लगाने के लिए, लेकिन थिक एज था और समेटेंगे 4 रन्स को अपने। गेंद इतनी बुरी नहीं थी, लेंथ सही थी, लाइन भी ठीक थी, बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे आजम, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन थिक एज की वजह से 4 रन हासिल करें, नतीजा वही निकला जिसकी इनकी कोशिश थी। थोड़ा फील करना पड़ेगा शोएब अख्तर के लिए, लेकिन वेरिएशंस बहुत मैटर करेंगी यहाँ पे, स्पेशली लेंथ जो अपनाएंगे आजम के खिलाफ। जरूरत से ज्यादा अपनी लाइन को चेंज कर दिया, क्या गेंद एक और चौके के लिए जा रही है, यस। कराची को ना सिर्फ किस्मत बल्कि खराब लाइन और वाइड के जरिए से भी रन हासिल हुए। लेग बाय का इशारा दिया अंपायर ने, समेट लेगा कराची इन रन्स को और सियालकोट पे मजीद दबाव बढ़ता हुआ। अच्छे ओवर करते करते चूक गए लाइन में शोएब। रूम फराम नहीं करना चाह रहे थे शोएब अख्तर, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे शफल जरूर किया था, लेकिन लाइन में चूक गए, बहुत ज्यादा एंगल कर दिया इस बार और लेग बाय इसका चौका हासिल करा। ये ओवर जो है वो बहुत जल्दी से रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे ले आया है और अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं और आजम इन 2 गेंदों में क्या कर सकते हैं हम सब जानते हैं। अच्छा फिनिश क्लोज करना पड़ेगा। जबरदस्त कमबैक, नौजवान बॉलर हैं, तवक्कुआत उनके साथ और सियालकोट का सर्वाइवल भी दांव पे लगा हुआ, लेकिन कुछ किस्मत उनके हाथ में ना रही, कुछ खराब लाइन के साथ गेंद की, लेकिन उसके बाद आजम जैसे बॉलर को उन्होंने कोई मौका नहीं दिया कि वो शॉट खेलने के लिए जाएं और स्टंप्स की लाइन में रहें, जो कि जरूरी रहेगा सियालकोट के लिए। साथ साथ मोहम्मद अली के पास 2 ओवर मौजूद हैं, अब्बास अपना कोटा मुकम्मल कर चुके हैं, बजाय लगता है कि दूसरे एंड से अब वो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन की जाने भी बढ़ेंगे। वापसी हासिल की है चौके कंसीड करने के बाद। 117 पे 4 कराची। डिफरेंट फेजेस में सियालकोट और कराची वाइट्स का कंपैरिजन जरूर नजर आ रहा है। पावर प्ले तकरीबन एक जैसा गया, 3 विकेटें सियालकोट ने गंवाई थी, 2 कराची ने। मिडिल ओवर्स में जब शोएब मलिक की बैटिंग कर रहे थे सियालकोट ने अपनी मोमेंटम को वापस हासिल किया था, वहाँ पे कराची वाइट्स थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर आजम मौजूद हैं पिच पे तो चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार वो तहिया कर लें अटैक करने का तो बड़ा ओवर हासिल कर सकते हैं। ये वो मौका था कराची वाइट्स के लिए जब अम्माद क्रीज पे मौजूद थे और उसके बाद उनके जाने के बाद एक खामोशी तारी हुई और असद शफीक और दूसरी तरफ से उमर बिन यूसुफ स्ट्रगल कर रहे थे बड़े शॉट्स के लिए। बिलाल आसिफ ने उनके खिलाफ चार्ज करने की कोशिश की थी, कमबैक भी अच्छा किया और अब देखना ये कि किस अंदाज से अपने बॉलिंग ऑप्शंस को रोटेट करते हैं। 3 ओवर में 38 रन दिए हैं और बाहिर यही नज़र आ रहा है कि कप्तान ने खुद रहने का फैसला किया इस अटैक में, तो वो तैयार हैं इस गेम के आखिर तक जाने के लिए। और 49 रन 30 गेंदों का मकसद यह है कि अगर ये आखिरी ओवर तक अलाइव रह गए और इसके साथ साथ विकेट्स भी इनकी एक फ्लरी में नहीं गिरती हैं तो वो इस टारगेट को आसानी के साथ चेस कर सकते हैं। विकेट की ज़रूरत है और तीसरा ऑप्शन शायद इनके जहन में नहीं होना चाहिए, उसके बगैर डिफेंड करके रोक के कराची को अपने टारगेट तक ना पहुंचने का। रूम बनाकर खेलने के लिए गए हैं आजम और फ्लैट, लेकिन भरपूर जाती चली गई, ज्यादा उठान की जरूरत नहीं थी, आजम की कुव्वत थी जिसने उनको पहला छक्का दे दिया। स्पिनर्स को बिल्कुल नहीं बख्शते आजम, और यही मैं बात करी थी कि इनके पास रेंज बहुत ज्यादा है, रूम बनाते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट पिच, फुलर लेंथ, कहीं भी आप बॉल कराएं। एक दफा इन्होंने तय कर लिया और अपनी आंखें जमा ली तो वो बाउंड्री के पार ही जाएगा। और ये खराब बॉलिंग है, बिलाल आसिफ ने पहले भी इसी लेंथ पे इमाद आलम के खिलाफ गेंद कराई और उस पर छक्के का है, और इस बार अगर आजम को ये लेंथ देंगे आप तो वो एक हाथ से भी बाउंड्री को क्लियर कर सकते हैं। जादुई फिगर्स कराची के लिए 1 2 3 for 4। और आजम ने एक मरतबा फिर वाइल्ड स्विंग किया, बैक टू बैक छक्के, और बिलाल आसिफ का ये डिसीजन सरासर गलत साबित होता हुआ खुद बॉलिंग में आने का सख्ता तारी कप्तान पे। आजम का तूती बोल रहा है कराची में।
मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये लेंथ जो प्रेफर करते हैं आसिम बार बार उसी लेंथ पे और इस एंगल से क्यों कराई जा रही है, क्योंकि ये वो लाइन है जहाँ पे ये स्वीप करते हैं, स्लॉक करते हैं, इवन आउटसाइड ऑफ स्टंप भी अप्रोच कर लेते हैं इस शॉट को। कोशिश ये करनी चाहिए कि राउंड द विकेट आके, ओवर द विकेट इनफैक्ट आके, अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल की जाए तो शायद चांस है, लेकिन फोर्थ स्टंप, विद इन स्टंप, लेग स्टंप, यहाँ पे आजम आपको नहीं बख्शेंगे। दूसरी जाने बिलाल को कोशिश करनी होगी कि ओवर ही छोड़ दें, गो के कम बैक कर सकते हैं, अपनी पूरी कोशिश के साथ उनके पास तजर्बा है, लेकिन शायद अब सोच रहे होंगे कि फैसला गलत था। 50 रन दे दिए हैं बिलाल ने और इनकी 4 गेंदें अभी भी बाकी हैं। और अगर हम हाइंडसाइट में इस फैसले को देखते हैं मरीना, तो उनके पास ऑप्शन मौजूद थे, बल्कि उससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि इस बात के लिए तैयार नजर आते हैं कि आखिरी ओवर तक ये गेम अलाइव रहे अपने आप को बॉलिंग में लाके, और बज़ाहिर लगता नहीं कि कराची माइंड करेगा स्ट्रेटजी को आखिरी ओवर तक जाने की। आजम ने इस इशू को सेटल करने का फैसला किया है, तीसरा मैक्सिमम ओवर का, कराची ऑन द टॉप। सुसाइड बॉलिंग है बिलाल आसिफ की जानिब से, राउंड द विकेट आके उनको उन एरियाज पे बॉलिंग करे जा रहे हैं जहां पे उनकी स्ट्रेंथ है। आजम के लिए बहुत आसान है ऑन साइड पे बाउंड्री क्लियर करना, इवन सीधा भी। यहाँ पे ना टर्न मिल रहा है ना पेस वेरिएशन नजर आ रही है, बना के दिया ये गेंद, एक नी पे बैठ के बआसानी क्लियर की बाउंड्री। ये इनके लिए थ्रो डाउन्स हैं। आजम माइंड ही नहीं कर रहे हैं, बिलाल आसिफ को देखकर उनकी आंखें चमक उठी हैं। 2 ओवर पहले इस गेम को फिनिश करने के लिए तैयार है आजम। बिलाल आसिफ को रिडेम्पशन का कोई मौका नहीं, अब एक गेंद बाकी, ओवर का ऑलरेडी चौथा छक्का। अगर इसी एंगल से इन्होंने बॉलिंग करनी है जो कि फेवरेबल नहीं है, तो एटलीस्ट तेज पेस के साथ आगे गेंद करें, क्योंकि ये तो बना के दे रहे हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ा आजम खान को, खड़े खड़े वो छक्के मार रहे हैं बिलाल आसिफ को। कोई टाइम मशीन ऐसी नहीं है मरीना जो कि उनको 3 मिनट पहले ले जाए, जब उन्होंने इस ओवर को करने का फैसला किया था। उस वक्त इनके पास ऑप्शन थे, 2 में 7 ओवर रन में रन देने वाले अब्बास के पास कोटा मुकम्मल किया था, अली के पास 2 ओवर बाकी थे, उस्मान खालिद ने 3 में 16 दिए थे। घड़ों में पानी पड़ गया, बिलाल आसिफ जो कि आज कप्तान भी हैं सियालकोट, और साथ उनकी उम्मीदों में भी। महज 24 रन दरकार फतह के लिए, 142 पे 4। आजम आए और उन्होंने फतह कर लिया नेशनल बैंक स्टेडियम को। पिछले ओवर में उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दी थी बिलाल आसिफ को, लेकिन जो पहला छक्का रूम बना के लगाया, उसके बाद उनको अपनी आइडियल लेंथ पर गेंद मिलती रही, स्वीप किया, पुल किया और राज करते रहे बिलाल आसिफ के खिलाफ। Evening, Bilal Asif would like to forget 8 sixes in 2 overs. That usually doesn't happen to him. Generally, he's a good bowler. That sort of a day, Salman, but that he just couldn't help. Ali, that usually happens to nobody. And usually you don't see spinners bowling towards the end of the 20 overs, and that to Azam Khan. So there's pretty much unusual stuff happening. And credit to Azam, who took full advantage, and he smashed 4 wonderful sixes. The first one was absolutely a flat. It was a screamer. And it was a display of brutal power from Azam Khan, who is on 39 of 17. And 2 overs for 60 runs, Bilal Asif. Oh, 2 overs for around 49, I guess. 29 and 53. 63. That's a lot. That's a lot. No, just 2 overs costing him. Yep. So Muhammad Ali with the ball in hand, looking to do something which does not
now feel likely to happen. And this one is pulled, but will be one only. Let's have a look, Salman, at those sixes. What happened there? This one is the one I was talking about, a flat screamer. And then, wow, some power that. And this one, once again, now it's a carbon copy. Last three are pretty much similar. And Bilal Asif, poor lad, today hasn't been the happiest day of his life. Yeah, it's quite easy now. Before that over, Sialkot was in the game. But after that over, they're out of the game. This is what can happen to you inside one over of Azam Khan. This is what he's capable of doing. And I'm glad that he's looking to finish the game. Previous few occasions, we've seen him struggle to finish the games. But he's in with the purpose. That is good, that is learning. He's taking the responsibility, he's taking the game on himself. Salman? 21 needed of 21 deliveries. Just easy now for Karachi. Well, that was a full delivery. I don't know what Danish was looking to do. Maybe trying to go for the square drive. But if you see the field, that deep point fielder is already towards the point. So he could have driven that easily towards normal cover position. And if he had timed it well, could have gone for 4. But Danish trying to do something special over there. And in the process, doing nothing. I feel for Sialkot team. Bilal also being the captain, couldn't help. Why you feel for them? I thought this is a good side. 6-time champions, just one win. This will be one this time. 3 fielders converging on that. And Ali, there are now a number of teams that you start to feel for. The Lahore 2 teams, Sialkot tonight, and I guess there was one more. I think Dera Murad Jamali, DMJ. Wow. 2 Lahore teams. Yeah, 2 Lahore teams. You can't feel for 4 different teams. I know, Salman, but in fact, you should be feeling for none. I just like them to win and give competition. It's good for the tournament that big teams like Lahore, they stay in. Or a team like Sialkot, they stay in the tournament. Because if they don't win this one, it will be very difficult for them to stay in the tournament. And being 6-time champions. Smash this time, through point, 4 or more. And Muhammad Ali, he's not happy. He's furious with the fielder at point. And that is Herrera. And we'll see in the replay what actually happened. Meanwhile, Azam Khan, he is rocketing towards the finish line. And again, cut with loads of power. And Herrera over there, well, he got a bad bounce as well. So Muhammad Ali needs to be calm. Any fielder would have got trouble trying to stop that at speed that it was traveling, and then also bad bounce. So 17 gone now, 150 for 4. $16 more runs of 18 deliveries. That sums up the evening for Sialkot. 3 overs for 27 for young Shoaib. What can he do? The speed with which Azam Khan is going, you might not be able to finish this Tapal cup of tea. $150. 17 overs. Danish to face Shoaib Akhtar. Just be sensible. It's the game of singles now for Karachi Whites, and they're going to get extras. They might not. No, they won't. Azam Khan, well, he is striking the ball as good as anyone. So he wants to enjoy a few more strikes. And Hamza Nazar was the fielder there, who was
not able to pick it up for the first time. So Shoaib Akhtar, he has a big task on his hand now. Azam is in full flow. That's in the gap. Couple of runs. Again, they're all over the place, Sialkot side. All over. I thought it wasn't a bad total after first inning. They were in the game until this man came. Azam Khan, 46 of 20 deliveries. The ability to hit it long, the ability to hit it hard. That strike rate tells you that. 230 the strike rate for him. Brilliant, absolutely brilliant. And he's lucky too. He's very lucky. That's gone through, 4 runs. That brings up the 50 for Azam Khan. What a fantastic knock this has been. He's hit few monstrous hits and now he's doing it with some ease. Azam Khan has set National Stadium on fire. His 14th 50. Yes, Azam Khan gets to his 50 of 21, and that is at the rate of knots. And he has been swear on the Sialkot bowlers. Anything in his zone has just flown out of the boundary ropes. So Shoaib Akhtar. And this one has been driven past mid-off. No chance for the fielder there. 4 more. And Karachi inching closer, courtesy Azam Khan, who is riding on an F-16 tonight. He's just too fast. What a player, what a striker. Look at that, just eased into it, through the gap. He's just showing, not just he can hit big hits, he can just play those regular drives too. And look what he has done to Sialkot. Just 5 more runs of 14 deliveries. Can he finish it off in this over? He's got that opportunity. Azam Khan, up and over. There it is, 4 more runs. The scores are now level. Azam Khan has done it for his team. Well, short this time, and Azam is able to time it good enough to go for 4 over cover. And scores are now level. And Azam would definitely like to finish it in style. And well, I don't know why the fielders are still on the boundary, so many of them. I think they've lost the hope even. They're not even going to try stopping Azam Khan from winning this game for his team. 15 runs of this over too. Azam Khan. He does it. He finishes it off. Karachi wins by 6 wickets, courtesy to a brilliant, brilliant inning by Azam Khan. He stays not out on 59. That is a much important win for Karachi Whites, and it's very important that he plays those match-winning innings, and he stayed there till the end. Yes, Azam Khan with his magic gum, and it just doesn't seem to finish. And he's finished the total meanwhile. He's just scored a quick-fire 50 and got his team over the line with 2 overs to spare. Brilliant win for Karachi, a big one, 6 wickets they won by, and with 2 overs to spare. And Sialkot, well, they had a torrid time today, especially the captain Bilal Asif. He went for 8 sixes on one side of the boundary, all in one area. And he doesn't look happy at all, and why would he be? So Ali, 8 sixes in the same region. No. All on the leg side. Ashifiq is a happy captain, and why not? They've beaten a good side, Sialkot, and twice now Sialkot have lost after posting more than 160 runs. And thrice here at National Bank Stadium, they've lost the game after winning the toss and batting first. That has been the strangest part. They have not learned. They've gone with the same strategies, same planning, and still lost. That is
Manzoor, everyone chipped in. Ahmad Alam started off this inning brilliantly. It's good that Ahmad Alam opened with Khurram Manzoor. He was on the go from ball one along with Khurram Manzoor, and that was some striking by Ahmad Alam. That leg sidage that Salman was mentioning, it was brutal on that side. These were monstrous hits all the way towards mid-wicket boundary for 6. That was some quality hitting from this youngster, but one too many. Went for too many and lost his wicket. This was the time when Sialkot did make a comeback, courtesy to a couple of wickets. And then again a partnership developed when Abbas got this wicket of Umair bin Yusuf. Danish Aziz played a good inning. And then Asad Shafiq and Azam Khan were together. And then came the mighty Azam Khan and his stroke play. Wonderfully driven for 4, and then came this flat screamer, and then 3 big sixes on the leg side, and all one bigger than the other. And then just to finish off, a few cut strokes and raising his bat for a wonderful 50, and another drive, and this time to the left of Bilal Asif. Ball really was after him tonight. And Karachi
Welcome to the post-match presentation. Another win for the Karachi Whites, and this time they beat Sialkot by 6 wickets and win this one comfortably by scoring 166 that was needed. Before we give away the awards, I'd like to welcome the guest to my left, Mr. Arslan Khan, SGM National Bank Stadium. Thank you for joining us. And next to him, Mr. Umair Iftikhar. He's the GM Events and Operations Trans Group. I'll request Umair Iftikhar to please present the AH Group Outstanding Performance of the Match Cash Award of 25,000 to Azam Khan for his brilliant knock of 50 and helping the side getting over the line. And Azam, don't go very far away because Mr. Arshad Khan will present you the Jazz Player of the Match Trophy and Cash Award of 25,000 for your overall all-round great performance. It was a stumping and also a quick fire 50 plus, making sure the side wins the game. We'll have a quick word with Azam on his performance. Well, you say it yourself. So I just want to dedicate this award to Ahmad Alam for the impact player of the game. So I'm just waiting for the takeaway. So Azam Khan has decided to give the AH Group outstanding performance of the game to Ahmad. Ahmad had a brilliant 45, just 15 in the power play. Well played, Ahmad. I get to take the trophy. Overall, great performance. किस तरह से देखा इस पिच को, क्योंकि शुरू में पावर प्ले में अमाद के अलावा इतना आसान नहीं हो रहा था, लग रहा था कि नहीं आ रहा है बैट पे. आई थिंक दोनों टीमों के लिए ऐसा ही था और ज़्यादातर अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादातर टीमें पहले बैटिंग करी थी क्योंकि हमारे जो पिछले 2 मैचेस स्टेडियम पे हुए हैं तो हमने भी उसमें पहले टॉस जीत के आई थिंक हम लोग टॉस हारे थे लेकिन हमें पता था कि हमने पहले बारी ही करनी है. तो आई थिंक एक चैलेंज था मेरे लिए भी कि यहाँ पे अगर हम चेस करें तो हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं बाकी टीमों के खिलाफ. पावर हिटिंग का एक एस्पेक्ट ये भी है कि प्रॉब्ली यू टेक द कंडीशंस आउट ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे कितना इजी या कितना मुश्किल था टू प्ले दैट नॉक जो अभी खेला? आई थिंक फास्ट बॉल पे थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बॉल थोड़ा लो भी रह रहा था और स्पेशली गुड लेंथ का बॉल इतनी आसानी से बैट पे आ नहीं रहा था. सो मैंने हमेशा से अपने इंटरव्यूज में बताया कि मेरे पास एक बिलीफ है कि आई कैन डेफिनेटली टेक ऑन द स्पिनर्स. तो वहाँ पे मुझे एक सिचुएशन दिखी तो मैं वहाँ पे मैंने रन्स किए और आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने टेक डाउन किया बॉलर्स को. Well played, enjoyed your knock and great gesture to share it with your teammate. Thank you so much, thank you. Azam, the player of the match for the game and handing over the outstanding player award to his teammate Ahmad. Now I'll request Bilal Asif, captain of Sialkot, to please come and have a quick word with us. Sialkot didn't finish on the winning side, but there are a few games left. Bilal, score अच्छा हो गया था पहले बैटिंग करके इस विकेट पे. कहाँ लगता है कि टीम थोड़ा मिस आउट कर गई? आई थिंक कि जो बैटिंग में हमने थोड़ा सा क्लैप्स किया लेकिन वो एंड ऑफ दी इनिंग्स जो है ना हमने उसको कवर कर लिया था. बट मेरा ख्याल है कि मेरी बॉलिंग और मेरे ओवर्स जो है ना वो कॉस्ट किया टीम को, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है मैच लूज़ किया. अदरवाइज़ हम लोगों ने बॉलिंग लड़कों ने बहुत बड़ी अच्छी की और बड़ा अच्छा एंड तक लेकर आए. लेकिन आपको पता है कि लास्ट पे अब T20 की ये खूबसूरती है कि एक आधा ओवर में मैच चेंज भी हो सकता है, तो वही हुआ. तो किसी भी बॉलर का एक खराब दिन तो आ सकता है, लेकिन अगर ओवरऑल टीम एफर्ट देखिए कैसा लग रहा है प्रोग्रेस का, कहाँ मिस आउट कर रही है सियालकोट, क्योंकि एक प्रोलिफिक जीतने वाली टीम रही है पिछले सालों में. जी बिल्कुल, क्योंकि लड़के यंग हैं सारे और हम लोग एक अच्छा कम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कोचेस भी मिलकर. तो हम सब इसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जितने भी लड़के हैं उनको चांस भी दे रहे हैं और जो भी आप देखेंगे यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं बॉलिंग में भी बैटिंग में भी. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो पॉजिटिव रिजल्ट है टीम के लिए वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. बट ओवरऑल क्रिकेट हमने बड़ी अच्छी खेली है और बड़े अच्छे यंगस्टर्स भी आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म करेंगे. चलिए, हार्ड लक टुडे, गुड लक फॉर द गेम्स टू कम. Bilal Asif, the captain of Sialkot. Now the Karachi Whites captain Arslan Shafiq will have a word with us, the winning captain today. असद, आपने कहा था 150 तक जो है यहाँ पे इस पिच पे अच्छा होगा और शानदार परफॉर्मेंस अमाद की बैट पे और फिर उसके बाद आजम की. एक अच्छी चीज़ है कप्तान आपके लिए ये है कि पिछले मैच में जो यहाँ हुआ उसमें उमैर ने अच्छी दिखाई बैटिंग डाउन दी ऑर्डर, यहाँ आजम ने की. सो यू फील कि वो अब रिदम हासिल हो रहा है अगर सेमीफाइनल तक पहुँचते हैं? जी बिल्कुल. देखें, पहले तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा बॉलिंग साइड को, क्योंकि एक वक्त में लग रहा था कि अराउंड 180 प्लस रन होंगे जिस तरह से स्टार्ट लिया था सियालकोट ने, लेकिन हमने लास्ट 4-5 ओवर में पुल बैक किया और वही हमें फिर मोमेंटम मिला वहाँ से.
और जिस तरह आपने बात की हर मैच में कोई डिफरेंट प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, तो एज अ टीम, एज अ कैप्टन मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है चीज़ें कि हर मैच में डिफरेंट प्लेयर जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस कर रहा है। और ये हमारी टीम की क्वालिटी है कि एक दो प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं है, सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो यंगस्टर्स को देख रहे हैं कि वो ऊपर आ रहे हैं और दे आर डूइंग द परफॉर्मेंसेस। कहीं आपको लगा था हाफ वे थ्रू कि शायद ये ज्यादा रन है, या यू वर कॉन्फिडेंट? नहीं देखें, जिस तरह स्टार्ट लिया था अमाद ने, जो वो ओवर लिया था एक, उसके बाद मोमेंटम हमारे पास आ गया था। मिडिल के ओवर्स में यही प्लान था, क्योंकि आज़म आपको पता है कि जब उसका दिन होता है तो वो ऐसा प्लेयर है, वो किसी भी टीम से मैच लेके जा सकता है। तो उसके लिए चीज़ों को आसान करना था। मेरी और उमैर की वहाँ पे पार्टनरशिप हमें चाहिए था थोड़ा सा और, अगर उसको ईजी करते तो। लेकिन फिर भी जिस तरह से स्टेज सेट हो गया था, उसके लिए एक परफेक्ट जो है टाइम था आज़म के लिए। आप उन कप्तानों से हैं इस वक्त जिसके पास काफी चॉइसेस हैं। टफ डिसीजन था गुलाम मुदस्सिर को छोड़ के और अनवर को लाना ही था ऑफ कोर्स। कितना मुश्किल है इस वक्त चूज करना 11? हाँ जी, एक दो मैचों में ऐसा हुआ है कि हमने बैटिंग में अच्छा फिनिश नहीं किया, तो हमारे जहन में था कि अगर एक डेथ में हमें एक बैट्समैन ऐड हो जाए तो हमारी टीम के लिए अच्छा होगा। गुलाम जो है वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन जब टीम बनती है तो वो सामने वाली टीम को देखते हुए, पिच को देखते हुए और रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मिलती है। तो यही है कि अब जब नेक्स्ट मैच में उसका चांस बनेगा तो वो खेलेगा, और मेरे लिए एज अ कैप्टन बहुत अच्छी बात है कि सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए पॉइंट्स मैटर करते हैं। क्लोजर टू द सेमीफाइनल, गुड लक टू यू। थैंक यू। Asad Shafiq, the captain of Asad Shafiq of Karachi Whites. And of course, this is a match that they won by 6 wickets, and that is all from the presentation.
We had an enthralling game here at the National Bank Stadium. It was sixes galore, and Karachi in the end ran away victors quite easily in the end by 6 wickets. Some entertainment was there as Ahmad Alam and Azam Khan run ragged with the Sialkot bowlers, in particular their skipper Bilal Asif, who came under some heavy fire from both these batters tonight. Welcome along to the post show. I've got alongside me Marina and Azam Khan, the man himself, who provided us with all that entertainment. That was really fantastic. Quickly coming to Marina, just sum up the game. We saw quite a comprehensive victory there for Karachi. How did you see that game? Well, first of all, I think Sialkot did well, courtesy of Shoaib Malik. They posted a decent total, but again, I would say that poor captaincy and poor line and lengths were bowled, and I think there was no homework being done. And when you do all sort of these things, you're pulling yourself into trouble, actually pushing yourself. And I think that's what actually happened with Sialkot. They never redeemed themselves, they never learned the lessons, and whatever the action was going on, they just let it happen. And with Sialkot, you know, with the name, we expect a lot of big things from them. It's quite a young side, but Karachi did what they had to do on the night. I think to some extent, Sialkot did well. They actually kept Khurram Manzoor, Ahmad Alam to some extent quiet. But again, in the middle overs, when the pressure was building, they actually were clueless of what to do, especially against Azam. And I think that, again, if someone like Azam is in the middle and you're giving and bowling him in his favourable areas, he's not going to spare you. Well, I'm not going to keep Azam waiting for long. First of all, congratulations for such a fabulous knock और जो आपने हमें entertainment provide की. आपके नाम के साथ जिस तरह की आप brand of cricket खेलते हैं, आप crowds favorite होते हैं. कुछ उस चीज़ का expectations का pressure है आप पर? सर थैंक यू सो मच जितनी भी आप लोगों ने तारीफ़ की बट मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि T20 क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट इम्पैक्ट स्पेशली जिस एरिया में मैं आके खेलता हूँ नंबर 5 नंबर 6 पे वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट का ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरी होता है और जिस तरह मैंने बताया कि पिच थोड़ा स्लोअर साइड पे था अपने इंटरव्यू में तो आई थिंक वहाँ पे मुझे एक ऐसा मौका मिला जहाँ पे मैं बिलाल आसिफ को टेक डाउन कर सकता हूँ और अगर आप मेरा स्ट्राइक रेट अगर उठा के देखें अगेंस्ट स्पिनर आई थिंक टॉप 3 में आता दुनिया के मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मतलब मैं एक तरह के स्टैट्स बता रहा हूँ अपने आप को तो ये तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे गेम को फिनिश कर सकता हूँ और अपने जो आने वाले बैट्समैन अगर मैं खुदा ना खास्ता आउट होता हूँ तो उनके लिए ज़्यादातर ईजी हो. अच्छा कि आपने बात की जो बिलाल आसिफ के खिलाफ आपका ओवर लगा क्या वो आप ओवर से पहले सोच रहे थे या जब पहली हिट लगी तो आपको लगा कि अब ये मेरे रडार में आ गए हैं तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें? आई थिंक मैंने चांस लेना था उन पे लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो पहली बॉल मुझे बैट कर दें क्योंकि वो थोड़ी पीछे थी तो आई थिंक उस वजह से मुझे अंदाज़ा होगा कि अब ये मुझे बॉल पीछे नहीं करेंगे अब मुझे आगे ही बॉल करेंगे या तो ज़्यादातर अगर आप देखें जो मुझे ट्रैप करने की कोशिश करें वो आउटसाइड ऑफ करने की कोशिश करें लेकिन नेशनल बैंक अरीना में ये है कि एक साइड छोटी एक साइड बड़ी है सो आई हैव फर्म बिलीव कि मैं ना शफल करके भी बॉलर को टेक डाउन कर सकता हूँ ऑन द शॉर्टर साइड. आज़म ऑब्वियसली आपको हमने बहुत लेवल्स पे कंसिस्टेंटली हिटिंग करते हुए देखा आप टेक्निकली भी साउंड है वो कितना हेल्प करता है कंसिस्टेंटली डिफरेंट ऑपोजिशंस के खिलाफ करने में? आई थिंक टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जिस तरह देखें जो भी क्लास क्रिकेट मैंने आज तक खेली है तो उसमें काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं तो उस हिसाब से अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सिर्फ मारने के लिए ही नहीं आता हूँ अंदर आई नो आई कैन ऑल्सो यू नो टेक डाउन द गेम मैं आराम से खेल भी सकता हूँ और एंड में जाके अपनी हिटिंग जो कि मैंने प्रीवियस PSL में भी करके दिखाया है
तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि मैं वन डायमेंशनली खेलना चाहता, लेकिन अगर कभी सिचुएशन ऐसी आती है ट्रिकी तो मुझे लगता है कि मैं आराम से टीम को निकाल भी सकता हूँ सिचुएशन। जिस तरह आज भी आते ही आपने पहले 1-2 सिंगलें की हैं, सर्टेन पॉइंट होता है प्री मेडिटेशन का, लेकिन आपकी गेम की अच्छी बात है कि आप बहुत उतना ज़्यादा प्री मेडिटेट नहीं करते जितना बाकी प्लेयर्स करते हैं। इससे भी आपको कंसिस्टेंसी में मदद मिलती होगी। जी मदद मिलती है। बेसिकली मैं अपने एरिया ज़रूर टारगेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से गेम प्लान ये रहता है कि मैं डाउन द ग्राउंड जितना ज़्यादा खेलूँगा उतना मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि डाउन द ग्राउंड जब आप खेलते हैं ऐसी पिचेस के ऊपर तो बॉल मिडल करना काफ़ी आसान हो जाता है। अच्छा आज़म, आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो आपको फॉलो करते हैं माशाल्लाह, जितनी कंसिस्टेंसी से आप हिटिंग करते हैं, क्या वो की पॉइंट्स होंगे जो आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे उन यंग प्लेयर्स को? आई थिंक की पॉइंट यही है, ज़्यादातर मैं अपनी बेस पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता हूँ, क्योंकि मैं लोअर बॉडी वर्कआउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता हूँ अपना, मतलब मैं हैवी वेट लिफ्टिंग करता हूँ, उस हिसाब से पावर लिफ्टिंग करता हूँ, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी वो पावर हिटिंग में, मेरी बेस स्टेबिलिटी में वो काफ़ी मदद करता है मुझे। और T20 क्रिकेट में एंटरटेनमेंट की बात होती है, काफ़ी खुश्क बातें हमने कर ली, काफ़ी आप एंटरटेनमेंट के लिए भी जाने जाते हैं, विकेटों के पीछे भी हम आपका बैंटर सुनते हैं। आज वॉक ऑफ करते हुए कोई थोड़ा मोहम्मद अब्बास के साथ आपका कुछ बैंटर चल रहा था, कुछ बताइए उस बारे में। आई थिंक हम लोग जब आए थे और अंदर क्रीज पे तो अब्बास भाई ने मुझे यही कहा था कि सीनियर्स का ज़रा ख्याल रखना, तो एंड में आके वही बातचीत उनसे हो रही थी कि सीनियर्स का ख्याल रखना पड़ता है, आपको पता है, क्योंकि अब्बास भाई के साथ मैं 2 से 3 साल साउथ पंजाब में भी खेला हूँ, तो आई थिंक उनसे काफ़ी एक अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि हमारी काफ़ी कम्युनिकेशन होती रहती थी ड्यूरिंग द सीज़न। और आपको खेलते देख के इसलिए भी अच्छा लगता है, एक फ्रेशनेस का एहसास होता है कि जिस तरह आप खेलते हैं, ज़ाहिर है प्रेशर तो होगा लेकिन वो नज़र नहीं आता, और इसीलिए आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है, तो अपने फैंस के लिए कुछ जाते जाते बताइए मैसेज। बस फैंस के लिए, जितने भी फैंस आपको पता है नेशनल T20 देखने आ रहे हैं, उनका काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ कि जब भी मतलब ग्राउंड के अंदर आ रहा होता हूँ तो वो नारे लगा रहे होते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि एक टाइम पे जब मैं यहाँ पहली दफ़ा इस ग्राउंड में उतर रहा था अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड इन द PSL, तो मुझे काफ़ी बैकलैश मिला था उस चीज़ में, लेकिन उस चीज़ को अब मैं देखता हूँ कि इट्स टर्निंग इनटू अ पॉजिटिव साइड, तो उसमें काफ़ी खुशी होती है और काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। इट हैज़ टर्न इनटू अ पॉजिटिव फॉर श्योर, और थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद अस इतनी लेट और अपने इतनी बैटिंग भी की, तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू थैंक मरीना एज वेल फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। So calling it in from here, National Bank Stadium. Action continues from here. We'll get a double header of games tomorrow as well, starting at 3 o'clock. Blockbuster games. The positions for semi-finals is up the grabs. You see Lahore Whites against Abbottabad, and Lahore Blues will be up against Sialkot again, who took a battering tonight. Well, that's it from all of us here. I hope you enjoyed our coverage tonight. We'll be back with tomorrow, and we look forward to your company. Until then, it's good night from National Bank Stadium. ये शाम बात की है, कराची का फरजंद आज बड़ी शॉट लगाने के लिए तैयार है, और एक मर्तबा फिर उससे भी बड़ा और भरपूर छह, और 2 कदम आगे आकर अपने विकेट को गंवा दिया।